डेटाबेस तैयार है, जो कि भारत देश के लिए ही बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें डॉक्टर विवेक का योगदान अमूल्य है, क्योंकि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस यात्रा का अनुभव, विनायक को अब तक का जो अनुभव रहा है, वो हम डॉक्टर विवेक के उनको सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो अधिक अच्छी तरीके से वो अपना अनुभव और अपना कार्य, अपना योगदान जो कि उन्होंने राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान में दिया है, वो हमारे साथ साझा करेंगे। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर विवेक कुमार को आमंत्रित करता हूँ उनकी व्याख्यान के लिए। सर, नाउ क्लोज ऑन यू सर। धन्यवाद डॉक्टर मनीष और मेरे सभी साथियों का, क्योंकि मैं खुद भी एनडीआई से ही मैंने अपना काम किया, रिसर्च में से काम की। सभी का धन्यवाद और सभी का अभिवादन। जो आज हमको एक बार फिर से पुनः वापस एक दूसरे के साथ मिलने का या बात करने का मौका मिला। शरद सभी मतलब जाने पहचाने हुए नाम देख रहे हैं इसमें मुझे। और जहाँ तक जो स्काउटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन या नेशनल मिशन फाउंडेशन का जो कार्य है, हम ऐसे लोगों को ढूंढना जिन लोगों ने अपनी सूझबूझ से कोई नई चीज करी है, जैसे आज का जो थीम है। तो मेरा जो वक्तव्य है, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, वो इसी के ऊपर है कि किस तरीके से हम नेशनल मिशन फाउंडेशन में ये जो ग्रासरूट्स इनोवेशन है या आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसको आगे ले जाने का काम करते हैं। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। मनीष, इसमें आपने शेयरिंग का एक्सेस दिया हुआ है क्या? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? जी सर, ये पेज अनरिस्पॉन्सिव आ रहा है। आई होप मेरा प्रेजेंटेशन आप सब लोगों को दिखा होगा। नहीं सर, अभी नहीं दिखा। अभी दिखा? हम उन इनोवेशंस के ऊपर काम करते हैं जिन्होंने अपनी सुविधा से कोई भी नहीं, चाहे वो कारपेंटर है, चाहे वो मैकेनिक है, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो पारंपरिक ज्ञान आधारक है। जो एग्जीक्यूट करने में हम 5 फंक्शंस जो मेन होते हैं, जो स्काउटिंग डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट है, जो इस तरह के लोगों को ढूंढना पूरे भारत भर में पूरा एक हम अकेले तो नहीं कर सकते, तो हमारे नेटवर्क के साथ मिलकर लाइक माइंडेड इंस्टीट्यूट्स, एनजीओज, एसएचजीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इवन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबके साथ मिलकर, इवन स्टूडेंट्स के साथ मिलकर भी हम लोग जो है इस तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं। और जो वैल्यूएट करना या वैलिडेट करना। अगर मान लीजिए कि हम लोग कभी किसी ट्राइबल एरियाज में गए, वहाँ पे किसी जानकार मिले,
तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। जो भी नॉलेज या जो भी इनोवेशन या जो भी प्लांट वैरायटीज हमें मिलती हैं अपना इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनको हमारा एनवायरमेंट सपोर्ट होती है, बिजनेस डेवलपमेंट की हमारी इम्प्लीमेंटेशन और सब। साथ ही साथ कुछ इनोवेटर्स ऐसे भी हैं जो इंटरप्रेन्योर नहीं, वो अपना इनोवेशंस में काम करना चाहते हैं तो उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मदद देना ताकि चीज़ों को आगे ले जाया जाए। और डिसर्वेशन इन सोशल डिफ्यूजन में कुछ ऐसी जो नॉलेज है या प्रैक्टिसेस हैं जिनका एग्जाम्पल जिनका कमर्शियल तो नहीं हो सकता लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ जो सोसाइटी का यूज होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल साइट करना चाहता हूँ कि एक बार आप सब हम सबको मालूम है कि कॉटन की क्रॉप में पेस्ट अटैक करने से कितना डैमेज होता है कितना। तो जब इसका पेस्ट इन्फेस्टेशन हुआ था तो हम लोग गुजरात का जूनागढ़ के गाँव में घूम रहे थे और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि गाँव में पूरा कॉटन की जो क्रॉप है वो डैमेज हो गई थी। और एक जो उसकी बात करूँगा कि क्योंकि उसमें अगली प्रॉब्लम आई और सारे इंसेक्ट पेस्ट उस पर आए और उन्होंने उसको जहाँ पे इनकी इंफॉर्मेशन को हम रीजनल लैंग्वेजेस में ताकि लोगों तक पहुंचा सके उसको आगे लेके जा सके। जैसा कि मनीष ने बताया कि अभी ऑलरेडी हमने पूरा 625 डिस्ट्रिक्ट से ऑल ओवर इंडिया करीब 3,25,00,000 के आसपास इनोवेशन आइडिया और नॉलेज को प्रैक्टिस को स्काउट किया है और करीबन 1100 के आसपास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं 1100 इनोवेटर्स और नॉलेज होल्डर्स को हमारे जो कॉम्पिटिशन उसमें हमारा जो प्रोग्राम्स है डॉक्टर जी प्रोग्राम जो भी मौजूद है इंस्पायर अवार्ड्स में उसके भी उसको जो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर देते हैं और करीबन 1200 से ज्यादा हमने पेटेंट्स फाइल किए हैं जिसमें 8 इंडस्ट्री के ऑपरेटर। साथ ही साथ हमने 77 प्लांट वैराइटीज को ऐसा नहीं है कि हम लोग घुमाने जा रहे हैं और हम सिर्फ ज्ञान धारण नहीं होते हैं। ऐसे कई सारे किसान हैं, अभी आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जिन्होंने खुद अपने चीजों को देखते हुए खुद सिलेक्शन प्रोसेस से उन्होंने वो प्लांट वैराइटीज या उनको एस्टैब्लिश किया, उनको नई वैराइटीज बनाई। तो उनको हमने एग्जीक्यूटिव रिकॉर्डिंग सेंटर में ऑलरेडी सबमिट किया जिसके 20 से ज्यादा ऑलरेडी उनकी रजिस्टर हो चुकी है, डिजाइन पेटेंट्स हमने फाइल किया है, ट्रेडमार्क्स फाइल किया है और 1500 टेक्नोलॉजीज को ऑलरेडी वैलिडेशन दी गई है। साथ ही साथ हमारा एक एमबीआई एक फंडिंग होता है जहाँ पे हमने करते कि ये जोखिम राशि बिकॉज अगर इनोवेटर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसका जो है हम उसको एक सपोर्ट देते हैं जिस सपोर्ट के थ्रू अगर वो वेंचर को लगाएगा, अगर वेंचर फेल होता है तो उसका रिस्क अनायत है और सक्सेसफुल होगा तो उसको रिपीट करना है। करीबन 120 से अधिक टेक्नोलॉजीज को हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं और एक और भी हमने जो बनाया है कम्युनिटी वर्कशॉप्स, कम्युनिटी वर्कशॉप्स बनाई है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ये जो इनफॉर्मल साइंटिस्ट हैं, हम बोल रहे हैं ग्रासरूट इनोवेटर्स, वो हेजिटेट करते हैं फॉर्मल ग्रुप से जोड़ने में। तो इस तरीके का हमने नेटवर्क बनाया कम्युनिटी वर्कशॉप्स का ताकि वो इनोवेटर्स के पास जाकर अपनी चीजों पे काम कर सके और एक लेवल तक का प्रोटोटाइप या डेवलप कर सके और उसके बाद उसको आगे लेके जा सके। साथ ही साथ हमने एक सेक्शन कंपनी जो है एनालिटिकल टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स एस्टैब्लिश किया ताकि इस तरीके की जो इनोवेटर्स हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या उनको आगे ले जाया जाए और हमने 22 ग्रासरूट सॉल्यूशंस ऑलरेडी रजिस्टर कर रहे हैं, आगे लेके गए हैं। इसके साथ ही साथ हमारा जो मैंने बताया कि हमारा जो प्रोग्राम होता है राष्ट्रीय भवन के साथ फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसमें हम लोग करीबन एक वीक का प्रोग्राम होता है जो राष्ट्रीय भवन में भी होता है या अभी हमने इसको और भी जगहों पे भी
की अलग-अलग ग्रुप है जिसमें न सिर्फ अवार्ड्स मिलते हैं जो हमारे आउटस्टैंडिंग नॉलेज होल्डर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, साथ ही साथ हमारा एक डीप डे पूरा प्रोग्राम था जिसमें एग्जीबिशन और कॉम्पिटिशंस होते हैं, इनोवेशन इन रेजिडेंस स्कॉलर प्रोग्राम है जो राष्ट्रीय भवन का, उसमें वो 6 से 7 दिन तक कुछ इनोवेटर्स उनके गेस्ट होते हैं और साथ ही साथ उनकी टेक्नोलॉजीज पे किस तरीके से पॉलिसी लेवल डिस्कशन से हमको आगे ले जाना है उसके ऊपर काम करते हैं। एक जो हमारा मेन प्रोग्राम है जो स्टूडेंट एक्टिविटीज को आगे ले जाने का, नर्चर करने का, क्रिएटिविटी को इंस्पायर और मार्क प्रोग्राम है जो कम्युनिटी नेशनल एसोसिएशन एंड नॉलेज। साथ ही साथ हम आशियान इनोवेशन एक्सचेंज प्रोग्राम जो हमने ऑलरेडी डेवलप किया उसके साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के साथ भी नेशनल इनोवेशन एक्सचेंज प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। और एक जस्ट आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि ग्रासरूट इनोवेटर्स ने सिर्फ स्पेसिफिक उन्होंने एग्रीकल्चर मशीन्स भी बनाई हैं, उन्होंने प्लांट वैराइटीज भी बनाई हैं, वेटरनरी मेडिकेशंस भी बनाए हैं और साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ के इकोसिस्टम प्रैक्टिसेस को भी दिया जिसको हमने with the help of our different labs, institutes, एवं हमारे जो अपने जो साथियों के साथ मिलकर उनको कन्वर्ट किया जिसको आगे ले गया। साथ ही साथ हमारा जो गेस्ट इसी इंस्टीट्यूट में कुछ इनोवेशंस में ऐसा नहीं है कि इनोवेशंस ने जो कभी-कभी हम कहते हैं कि जो आविष्कारी आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स को बच्चों ने देखा और उसके बाद उन्होंने वो प्रोटोटाइप्स को डेवलप किया या अपने टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जो हमें अभी जो दो एग्जांपल मैं आपको बाद में साइड में करूंगा। एक मैनुअल बेस्ड लिफ्टिंग जंपिंग कार्ड एक बच्चे का था शांतमंडल मथुरा से जिसने ये आइडिया दिया जब उसने देखा था जब सुबह सफाई कर्मचारी जाते हैं और वो सफाई के लिए वही कन्वेंशन तरीका यूज करते हैं तो उसको चेंज करके उसको बनाया और अभी ऑलरेडी ये सजन इनोवेशन के नाम मिलकर हम इसको आगे ले जा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल आपको डिटेल में बताऊंगा वॉकर का। अभी रिसेंटली हमने ग्रासरूट इनोवेशंस को और आगे तक ले जाने के लिए हमारे एनआईएमटी ने एमिजन के साथ एमओयू किया है जिसमें ताकि उनके इनोवेशंस को एक प्लेटफॉर्म मिल सके और वो आगे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचा सकें। अभी जॉन डेयर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया हमने जॉन डेयर के साथ एक मैनुअल ट्रैक्टर ऑपरेटेड पैडी ट्रांसप्लांटर था। साथ ही साथ एक जो वैसे मैंने पहले भी बोला जो चिल्ड्रंस इनोवेशंस की जो नर्चर करना क्रिएटिविटी क्लास 6 से क्लास 10 का ये प्रोबेबली वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग भारत के 5 लाख स्कूल से कम 2 आइडियाज को सोर्स कर रहे हैं। करीबन 10 लाख आइडियाज हमारे पास आते हैं और लास्ट ईयर आपको बताना चाहूँगा करीबन 7 लाख से ज़्यादा आइडियाज हमको मिले जिनका फर्स्ट लेवल का स्क्रीनिंग करने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन के लिए बच्चे सेलेक्ट हुए उनको करीबन 50,000 बच्चों को 10,000 रुपए की राशि दी गई ताकि वो अपने प्रोटोटाइप्स को और अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करके डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर लेकर आए और नेशनल जो लेवल हमारा ये कॉम्पिटिशन होता है जिसमें बेस्ट 60 स्टूडेंट्स होते हैं उनको फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में और साथ ही साथ उनको पेटेंट कराना उनको इंक्यूबेशन सपोर्ट देना ये सारी एक्टिविटीज इसमें शामिल है। जो रिसेंटली अभी हमने एक इनोवेशन पोर्टल भी लॉन्च किया जहाँ पे इस तरीके के एग्जांपल्स जो सोसाइटी के लिए यूजफुल है रिसर्चर्स के लिए ताकि वो लोग आगे इस पर काम कर सकें। देखिए जो मैं प्रिंसिपल जो है हमारे लास्ट फेस्टिवल में माइनर अवार्ड्स जो हुआ था और इसमें आप देख रहे होंगे जो इनोवेशन एग्जीबिशन की साथ साथ बच्चों को मौका मिलता है उनसे और प्रेसिडेंट से इंटरेक्ट करने का और उनसे संसाधन को मोटिवेट करने के लिए जो हमारे जो डिफरेंट इनोवेशन एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं आशियान इनोवेशन प्रोग्राम है फ्लेक्स है साउथ अफ्रीका इनोवेशन प्रोग्राम वहाँ पे इनोवेशन एक्सचेंज में ग्रासरूट इनोवेटर्स को वहाँ भी जाकर उनके इनोवेटर्स के साथ बैठ के डिस्कशन करने का मौका मिलता है और उनको कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है ताकि वो उनके इनोवेशंस को आगे बूस्ट में लेके जाए। ये कुछ ऐसे इनोवेशंस या जिनके ऊपर ऑलरेडी आप लोगों को मालूम होगा कि जो पैडमैन के बारे में जो अरुणाचल उन्होंने जो सेलेक्टेड एक्टिविटी मशीन बनाई थी जिसके लिए उनको परमिशन भी मिला और उसके ऊपर एक मूवी बनी। दूसरा एग्जांपल शायद आप लोगों को मालूम हो एक तेलुगु पिक्चर बनी थी लक्ष्मी आशु मेकिंग मशीन मलेशिया में इनोवेटर है इन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आप शायद अगर जो कोई आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से बिलोंग करते हुए मालूम होगा कि वहाँ पे कुचपल्ली एक साड़ी होती है जिसको ये वीविंग में करीबन एक आंसू प्रोसेस है जिसमें 9,000 बार आपको अपने हाथ को घुमाकर उसका एक आंसू प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है जिसमें वहाँ के जो वर्कर्स हैं जो वीवर्स हैं उनको एक साड़ी बनाने में कम से कम एक दिन लग जाता था। एक से दो साड़ी एक दिन में ही बन जाती है। उस पूरे प्रोसेस को इसकी आंसू मशीन ने रिड्यूस करके 1.5 घंटे में कर दिया
ताकि वहाँ की वीवर्स को इसमें हेल्प मिले। और अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट के बाद हमने करीबन वहाँ पे इसको 2 करोड़ 1 करोड़ की जो उसको सपोर्ट मिला है, उससे ये करीबन वहाँ पे 700 से ज़्यादा मशीन को लगा रहे हैं ताकि वीवर्स को और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि डिसेमिनेशन और सोशल डिफ्यूजन हमारा मेन प्रोग्राम है, ताकि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सोसाइटी तक पहुँच सके, जिसमें हम लोग जो कंपनी है हमारी नॉन प्रॉफिट, उसमें हम लोग का जो मेन काम होता है, जो भी इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको जो बेसिकली सपोर्ट देना उन इनोवेशंस को जो सोशली यूजफुल है, कमर्शियली वायबल है, स्केलेबल है या इनोवेटिव, उन टेक्नोलॉजीज को सेलेक्ट करके हम अपने स्कीम में आगे लेकर जाते हैं। इस स्कीम में मेनली जो इनोवेशन के ऊपर लीगल असिस्टेंस, मार्केट स्ट्रेटजी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरफेसिंग, नेटवर्किंग और क्लोज मॉनिटरिंग के साथ ही उनको आगे लेकर आने के लिए उन्होंने वर्कशॉप्स करनी है, हमें आईपी प्रोटेक्शन में फिर आप के ट्रायल्स एंड डेमोंस्ट्रेशंस आप किए जा सकते हैं, कंसल्टेशन एक्सपर्ट्स का, ये सारी चीजों को हम उसमें देखते हैं ताकि वो इनोवेशंस को आगे लेके जाया जा सके। ये कुछ फोटो जैसे भी हमने रिसेंटली कंप्लीट की थी इनोवेशन की ये वर्कशॉप। जो एक और जो सबसे खास बात है, कभी-कभी जो इनोवेटर्स होते हैं वो अपना एक लेवल का प्रोटोटाइप बना लेते हैं, लेकिन शायद उससे आगे वो नहीं कर पाते। तो एनआईएफ में हमने जो हमारा ऑफिस है गांधीनगर में, वहाँ पे सारा लैब एक एस्टैब्लिश किया है कि मशीन साथ मिलकर, उस लैब में भी हम इनोवेटर्स को बुलाते हैं ताकि वो अपने इनोवेशंस को एक वर्किंग प्रोटोटाइप के टेक्नोलॉजी की तरफ से उसको डेवलप कर सके। और उसमें जो हमारी फैब्रिकेशन लाइन में सभी तरह की जो मशीन है जो एटलीस्ट उस लेवल पर आगे लेके जाए जा सके। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा जो हमारे ऑल ओवर इंडिया से कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स दूंगा जो इस तरह के इनोवेटर्स हैं जिन्होंने अपनी शुरू से नई चीजें भी बनाई और काफी सक्सेसफुली उसको आगे लेके जा रहे हैं। पहला एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, शायद आप मुझसे कुछ लोगों ने सुना हो, ये यमुनानगर के हमारे धर्मवीर सिंह कंबोज जी थे जिन्होंने एक मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाई थी। बेसिकली आज से करीबन 20 साल पहले ये रिक्शा चलाते थे दिल्ली में, और वहाँ पर जब ये सवारी को लेकर जाना और लोगों से, तो वहाँ पे हर मार्केट्स भी जाते रहते थे। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से एक एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर ने इनको बोला कि आप रिक्शा नहीं कैरी कर पाएंगे, तो इन्होंने वापस अपने गांव आए और गांव आकर इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने हर्बल मेडिसिन का ही अपना जो खेती करूं। तो इन्होंने एलोवेरा लगाया और भी कुछ लगाया, लेकिन जब वो बेचने गए या उसको, तो उनको पता चला कि एग्जैक्ट जो पैसा है या जो वो रॉ मटेरियल में है, रॉ मटेरियल में प्रोडक्ट में। मिक्सी या जूसर प्रोसेसर की तरीके से वो बना रहे थे। फिर वो हमारे टच में आए और धीमे धीमे हमने इसको अपने यहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके डिजाइनर्स और एनआईटी के डिजाइनर्स बाकी सारों के साथ मिलकर डिफरेंट लेवल्स पे काम किया और धीमे धीमे इस प्रोटोटाइप को डेवलप करते हुए तो प्रोटोटाइप आया। फिर वहाँ पे हमने जो चीजें थी इसमें से ज्यादा मशीन से ऑलरेडी भेज चुके हैं। 3 डिफरेंट इसमें इन्होंने वेरिएशंस बनाए हैं, छोटे से कैपेसिटी 12 लीटर से 130 लीटर की कैपेसिटी मशीन बनाई है। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और ध्यान रखी कि ये मशीन में ये सारे काम किए जा सके। अगर कोई कंपनी वाला होता तो वो शायद ये सोचता कि हम इससे डिफरेंट वेरिएंट्स निकालें, बट क्योंकि ये किसान थे और ये किसान की प्रॉब्लम समझते हैं, इस वजह से उन्होंने उसको रखा कि ताकि एक ही चीज से ज्यादा काम किए जा सके। साथ ही साथ ये जहाँ जाते हैं बकायदा लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे लोकल गाय रिसोर्सेज से प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, इनकी मशीन को यूटिलाइज करते हुए, चाहे वो ऑरेंज जूस से कैंडीज बनाना है, वो सारा पूरा उनका जो पूरा जैम बनाना, आमले के लड्डू, सारा वैसे में पूरे प्रोसेस का पूरा नो-हाउ सॉल्यूशन
हैं कि इस तरीके से किया जा सकता है। दूसरा जो मैं एग्जाम्पल साइड करूँगा, ये मिट्टी की यूसुफ भाई प्रजापति है, जो एक कुम्हार है, और जब वो अपने फादर के साथ गांव में जो हाट लगती है, बाहर बाजार लगती है, वहाँ पर जब जाते थे, जब ये छोटे थे, तो वो देखते थे कि उनके फादर बोलते थे कि गांव वालों का फ्रिज ये या ले लो, मतलब जिस तरीके से, तो इनके दिमाग में क्यों ना मैं एक ऐसा फ्रिज बनाऊं जो वाकई में गाँव वालों की है। और धीरे धीरे उन्होंने काम करना शुरू किया, उसमें कई सारे मतलब टेस्टिंग किया, और करीब 25 लाख से ज़्यादा की डेप्थ में आ गए। उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया, और धीरे धीरे फिर काम करते हुए हम लोग उसमें जब हमारे साथ जुड़े, उसके बाद से उन्होंने काफ़ी कुछ सपोर्ट किया है। आज की डेट में इनका जो टर्नओवर है, उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट में बनाए, एक ये अपन फ्रिज है, मिट्टी को जो बेसिकली हमारा जो घड़ा होता है उसकी कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। इसमें आप जो है ऊपर जो उनका चैम्बर है उसमें पानी रख सकते हैं, नीचे जो फ्रिज की तरीके से जहाँ पे वेपरेशन की वजह से ठंडा हो जाएगा, उसमें 1 से 2 दिन तक आप फ्रूट फ्रेश कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्ले पैन भी बनाया, और ये पहले आप मुझे अभी तो आपने टैक्स और रेंज ऑफ वेरिएशंस निकालते हैं ताकि वो मार्केट में अपने आप को सर्विस कर सके। आज इनका एनुअल टर्नओवर अराउंड 2 करोड़ है। अभी इनके डिफरेंट आउटलेट्स भी हैं इंडिया में, कई जगहों पे अमेज़न पे भी इनका ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है जो एलआईएफ ने इनको दिया, चाहे वो बिजनेस के लिए सपोर्ट था, चाहे वो मिशन के लिए सपोर्ट था, जो बच्चों की ने एक संवेदना को देखा, और उस प्रॉब्लम को, हालांकि ये प्रॉब्लम हम सबने भी सोची होगी, हमारे घर में भी ऐसी प्रॉब्लम आई हो, लेकिन हमने शायद उस पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। ये एक स्टूडेंट है शालिनी कुमारी, क्लास 8 की, पटना बिहार में, और उनके दादाजी को जब चोट लगी तो डॉक्टर ने उनको वॉकर का एक सब ने ही अवार्ड दिया था, और हमने साथ में बाद में हमारी टीम में डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट वर्जन्स बनाए, एक्सपर्ट्स को काफ़ी इन्वॉल्व किया, एनआईडी की डिज़ाइन टीम को भी इन्वॉल्व किया, और अभी हमने इस टेक्नोलॉजी को विस्को को ट्रांसफर किया है, और ये आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है इसका अपनी यूनिक लेवल रिजन सर्वेयर और फाइनल लेग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें जो 2 लाख रुपए में डाउन पेमेंट था वो शामिल हो गया, उससे जो अपनी फेलोशिप से आगे काम पढ़ाई कर रही। तो बेसिकली जो बच्चों की जो आइडियाज को हम किस तरीके से आगे लेके जाना, एक और एग्जाम्पल जो मैं बात की थी कि हम लोग किस जहाँ तक हम बात करें जो पूरी जो जर्नी है आज की डेट में तकरीबन 29 हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एक रीजन जो काउंसिल है उसके साथ मिलकर एक ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट को एक्टिव बैंक में कन्वर्ट करने के लोग अप्रोक्सीमेटली 50,000 साइंटिस्ट को दिन लगा चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो बेसिकली जो इन्होंने जो ग्राफ्टिक से जो ये एप्पल वैरायटी ड्रम चेन वैरायटी बनाई है, उसमें हम लोगों ने इनको पूरा हैंड किया हुआ है किस तरीके से आपको ग्राफ्टिंग करके आगे
प्लांटिंग करनी है, प्लांटिंग से पहले का क्या प्रोसीजर है, कितना पेड़ बनाना है, कौन सी मिट्टी वहाँ के उपयोग, ये सारी चीज़ों को हमने फार्मर्स को बताया। ये उनकी नर्सरी को भी डेवलप करने की जरूरत है ताकि ये जो है वहाँ पे प्लांटिंग से सेटलिंग्स बना सके ताकि जो है बाद में सप्लाई कर सके। कुछ फोटोग्राफ और डिफरेंट जगहों पर कैसे मतलब ये सारे प्रोसेस सभी फार्मर्स को वहाँ पे बताए जाते हैं। उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जो भी इस तरीके से जो फार्मर्स को आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फाइल्स किए कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, प्लांटिंग करनी है और जैसा कि मैंने बताया फिर साथ साथ यहाँ पे हो गया उसका हमने फिर क्वालिटी पैरामीटर्स जिसमें क्या उसमें जो वहाँ पे एक्टिव हो रहा है उसमें क्या फर्स्ट में प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ये सारे आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा एक्टिव है कहीं ऑलमोस्ट इन जजमेंट में 29 स्टेट्स में हमने वहाँ प्लानिंग की है होगा। कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे शूटिंग में इन एक्सटर्नल हॉट एरियाज है जैसे बंगीर उड़ीसा में वहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो क्वालिटी है ये आप उनकी सुंदरगढ़ उड़ीसा का एग्जाम्पल, राजस्थान में आप वहाँ पर शूटिंग में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़। तो बेसिकली ये जो वैरायटी अगर उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं की होती या नहीं बनाई होती और हमने इसको प्रमोट नहीं किया तो शायद हम इस लेवल पर आगे लेकर नहीं जा पाते या वो वहीं तक रह जाता। एक और जो वैरायटी है जो मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ वो दादाजी खोटागढ़े हमारे जो महाराष्ट्र से इन्होंने एक वैरायटी दिया कि जो क्योंकि के बारे में रजिस्टर भी किया जेनस वैरायटी के लिए एज अ स्टैंडर्ड भी माना जाता है। साथ ही साथ मैं एक दो एग्जाम्पल आपको ये प्रेजेंट वैरायटी है हमारी जो पेरिनियल वैरायटी है हमारे मध्य प्रदेश राष्ट्र ने वैरायटी बनाई है। इसमें जो पॉट्स और सीड्स को ट्वाइस इन ईयर हार्वेस्ट कर सकते हैं, हाई यील्ड है इसकी, लेंथ ऑफ पॉट्स की 3 से 4 इंच होता है और सीड रेट इसका लेसर डिजीज टॉलरेंट है। इसका ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में किया है और कई स्टेट्स में 4 से 5 स्टेट में अच्छी परफॉर्म कर रही है। बाहर की लोकल वैरायटी इसी को बैठ ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स में उत्तर प्रदेश की देता हूँ, शायद आप लोग उसमें से कई लोग उनको जानते होंगे। जीवराज पसंद जो उन्होंने अमरूद की वैरायटी बनाई है, रामविलास मॉडल की लखनऊ की है और इसका जो खास जो है इसकी फ्रूटिंग पूरे साल भर होती है। विंटर में इसका जो फ्रूट है वो कई समर में स्ट्रिप वाइट येलो है। ये दोनों भाई हैं और इनमें आपस में इतनी अच्छी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है कि इसकी वजह से हमें कई सारी वैरायटीज इन्होंने जो हमारी जो पिजनपी की, वीट की और काडी की बनाई है जो हमें मिली है और ऑलरेडी इस पे पीपी व्यापार में रजिस्टर है। तो जो सोसाइटी के लिए इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो अपने आप में सराहनीय है। तो दूसरा जो एस्पेक्ट जो मैंने बोला था कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज हम डॉक्यूमेंट करते हैं उसको फिर हम जब मार्केट में लाना या उसको कैसे वैलिडेट करना, उसमें हम लोग जो काम करते हैं तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि हमारा जैसे ऑलरेडी सीएसआईआर के साथ एमओयू है, हमारा आईसीएमआर के साथ एमओयू है और डिफरेंट लैब्स के साथ हमने मिलकर काम किया हुआ है इन टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ हमने क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया ताकि ये टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा तरीके से आगे लेके जाया जाए। हार्बल फॉर्मुलेशन बनाया है क्लैम्प कमाल जिसका ऑलरेडी हमने वैलिडेशन भी किया और जो अप्रोच रेगुलेटर या सॉर्ट फर्टिलिटी इन्फ्लुएंसर या इंसेक्ट कंट्रोल टर्माइट प्रिवेंशन के लिए यूजफुल है। इनके बेस पे जो उन्होंने नॉलेजेस हमें शेयर करी उसके बेस पर हमने टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की कोशिश करी। कई कंपनीज के साथ मिलकर उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया, जैसे
थे उनको हमने एक जगह पे कंबाइन किया और फिर उसका जब फॉर्मुलेशन बना के जब टेस्ट किया, उसके अच्छे रिजल्ट्स आए, उसका पेटेंट फाइल किया, उन लोगों के नाम से उसको आगे लेके जा रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी को हमने इसमें समझा। और यहाँ पे अभी हमने जो मलेरिया वेक्टर कंट्रोल के साथ मिलकर हमने इसका चार से 5 घंटे का इसका असर है। एक और जो हमें यहाँ पर प्रैक्टिस मिली थी, जहाँ पर हमने इसको कैटरैक्ट के लिए जो मिली थी, जो हमने जब हमारी टीम ने देखा तो वो फॉर्मुलेशन, वो प्लान करके कैटरैक्ट को ये क्योर कर रहे हैं। अभी जो आई ड्रॉप हमने बनाई, इस पर भी फर्दर काम चल रहा है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। वेटनरी मेडिकेशन का, तो वेटनरी मेडिकेशंस में भी हम लोगों ने जो फॉर्मुलेशंस आए, जो चीजों को तो बेसिकली टीम ने मिलकर डेवलप किए और वहां पर वेटनरी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर हमने इसको एक पूरा जो एंटी टिक फॉर्मुलेशन को नेशनल चैंपियन की तरीके से लिया और कई स्टेट्स में वहां पे जो वेटनरी इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे फार्मर्स हैं, उनके साथ ये लाइफ स्टॉक होल्डर्स के साथ मिलकर ट्रायल्स की और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो एक कॉमन सोल्यूशन था जिसको हमने इसको फॉर्मुलेशन में, जिसमें आजोडक्टा एंड वाइटेक्स को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाया था और 48 घंटे के अंदर इसमें जो टिक्स का इन्फेस्टेशन नहीं होता है, खत्म हो जाता है। तो जस्ट फॉर आपकी नॉलेज, अभी आप सबको मालूम ही है कि हम 46 रैंक में हैं इंडिया का ग्लोबल इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स में। और अगर हम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो 9th प्लेस पर है। और जस्ट चूंकि स्टूडेंट्स जुड़े होंगे इस वजह से मैंने इसको शेयर किया था। थैंक यू सो मच मनीष फॉर गिविंग अ टाइम फॉर अ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि ग्रासरूट इनोवेटर्स के लिए काम करता है और आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए भी काम करता है। और इसका पूरा इसकी जो जर्नी है एनआईएफ की, और जिस तरीके से एनआईएफ ने ग्रासरूट इनोवेटर्स को प्रमोट किया है, उनके अनुभवों को दुनिया के सामने रखा है और उनको एक रिकॉग्निशन दिया है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय काम है। और इन सब में, इस पूरे यात्रा में डॉक्टर विवेक का भी बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस सब पूरी यात्रा के बारे में और अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे ही जी सर, और ऐसे ही अभी कभी जब भी जरूरत पड़े हम आपको फिर से यही अनुभव साझा करने के लिए फिर से आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसमें 2 चीजें मैं और कहना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास भी अगर कोई ऐसे इनोवेटर्स हैं, अगर आप वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो खासतौर से जो मुझे नहीं मालूम कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने कहाँ से हैं, या सारे हमारे एनबीआरआई के कलीग्स हैं, तो जब भी अगर आपको इस तरीके का कोई भी आदमी, क्योंकि एनबीआरआई में भी बहुत सारे लोग आते हैं, वहां पर अगर ऐसा किसी भी कोई इनोवेटर होता है तो आप उसको हम तक जोड़ सकते हैं। हो सकता है आपके एक छोटे से प्रयास से इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए या उसको रिकॉग्निशन मिल जाए। जो मैंने ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैंने एप्पल का आपको एग्जाम्पल दिया, उसको स्काउट अगर किया था तो हमारे फॉर्मर वाइस चांसलर हैं, उन्होंने स्काउट किया। वो एक फील्ड विजिट में गए हुए थे और वहां पर उन्होंने इसको देखा कि एक फार्मर है, उसने इस तरीके का चीज बनाई हुई है, और देन उन्होंने उसको बोला कि आप नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में जाइए, वहां पर उनसे मिलिए ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके। तो विजय गौतम साहब ने अगर हमें नहीं ये जानकारी शेयर की थी तो शायद हम इस वैरायटी को शायद इस लेवल तक नहीं लेके जा सकते होते। तो आपके जो भी नेटवर्क है उसका यूज कीजिए। हम सब मिलकर ही ग्रासरूट इनोवेशन को आगे लेके जा सकते हैं। और ग्रासरूट अभी जो इंडिया इनोवेशन या जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें भी ग्रासरूट इनोवेशन इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट उसको किया गया है।
तो जितना ज्यादा हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे उतना ज्यादा ही हम लोगों के लिए, हम सबके लिए अच्छा होगा। वो टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी हम लेकर आके हम आपको ला सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे अगर कोई इनोवेटर या फिर नवाचार हमारे पास आसपास रहते हैं तो निश्चित ही हम इसको एनआईएफ के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और हम खुद भी कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे एनआईएफ के साथ, जो कि ऑलरेडी सीएसआर के साथ कोलैबोरेशन है और एनबीआरआई भी सीएसआर की एक लैब है। तो ऐसे प्रोग्राम में जब भी कहीं कोलैबोरेशन की जरूरत पड़े तो हम निश्चित ही आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। और आपके इस अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर शरद श्रीवास्तव जी को कि हमारे जो द्वितीय वक्ता है उसके बारे में थोड़ा परिचय और जो हमारा ये प्रोग्राम है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, उसके बारे में थोड़ी सी आपको एक इंफॉर्मेशन साझा करें। तो धन्यवाद डॉक्टर मनीष। सबसे पहले डॉक्टर विवेक को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कम समय में उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमारे बीच अपने अनुभव को साझा किया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, विज्ञान प्रसार, सीएसआईआर एनबीआरआई की टीम की तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये पूरा वीक लॉन्ग साइंस फेस्टिवल है और आज के दिन हमारे दो महत्वपूर्ण वक्ता थे। प्रथम डॉक्टर विवेक, जिनका आप लोगों ने व्याख्यान सुना। इसके बाद हमारे द्वितीय वक्ता डॉक्टर विश्वजननी है, जो टीकेडीएल की हेड है। उनका शेड्यूल अभी 11 बजे से है और मैडम ने अभी लॉगिन नहीं किया है क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से ही लॉगिन करना है। तो इस बीच में अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा और मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा इंतजार आप सभी श्रोतागण को करना होगा, लेकिन शेड्यूल के हिसाब से हम लोग उनको रिक्वेस्ट किए थे क्योंकि वो ऑलरेडी एक मीटिंग में है अभी और वो 11 बजे लॉगिन करेंगे। जैसे ही वो लॉगिन करती हैं उसके बाद हम उनका सूक्ष्म परिचय दे करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर शरद एंड माय ऑल सीनियर्स, माय कलीग्स एट एनबीआरआई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको कुछ पूछना हो तो जरूर हम बात कर सकते हैं तब तक, अगर अभी हमारे पास समय है तो। हमारे बीच जो भी यहाँ पे उपलब्ध है श्रोतागण, अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो डॉक्टर विवेक से आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा लगा डॉक्टर विवेक, आपको बहुत दिन बाद सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम सभी को। थैंक यू शरद, थैंक यू। कभी भी मतलब एनबीआरआई के लिए तो कभी भी एनी टाइम। और हम तो आपसे व्यक्तिगत अनुरोध करेंगे कि आप जब कभी भी लखनऊ की तरफ आए आप हमें समय दें और हमारे बीच अपने अनुभव साझा करें, जिससे कि क्योंकि हमें पता है कि आप यहाँ से जाने के बाद एनआईएफ में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत से नए अन्वेषण हुए हैं वहाँ पे आपके सुपरविजन में और हम सभी अपडेट होते रहते हैं आपके नए जो भी आपके प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजीज या प्रोसेस आप लोग डेवलप कर रहे हैं। और कभी अगर आप हमें समय दें और लखनऊ आए और हमारे बीच जो है अपने अनुभव को फिजिकल मोड में साझा करें, क्योंकि वर्चुअल मोड तो ठीक है कि हमारे लिए अच्छा है, पर चूंकि आप हमारे बीच से ही वहाँ गए हैं तो हम आप जरूर आपसे अनुरोध करेंगे कभी आए और हमारे बीच अपने अनुभव साझा करें। बिल्कुल शरद, एनी टाइम शरद जी, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। मैं जब भी लखनऊ आऊँगा आप सभी से मिलना चाहूँगा और ये एनबीआरआई का ही वो है जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। वहीं की लर्निंग है, वहीं पर बहुत कुछ सीखा है एनबीआरआई में। सो थैंक यू सो मच, आई विल टेक लीव। धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर विवेक। So let's wait for the next speaker. She will be joining at 11. So we have a short break before the next speaker comes in. Thank you.
शरद श्रीवास्तव जी को निवेदन करता हूँ कि वो हमारे अगले वक्ता श्रीमती डॉक्टर विश्वजननी का पूर्ण परिचय दें। थैंक यू डॉक्टर मनीष। हमारे आज के द्वितीय सत्र के जो वक्ता है डॉक्टर विश्वजननी जी सटगिरी, CSIR परिवार में एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, सर्वप्रिय लोकप्रिय कह सकते हैं। मैडम हम आपका स्वागत करते हैं आज, और आपके स्वागत ही नहीं, आपके हम क्योंकि आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें जो हमारे वक्ता बाहर से हैं जिनको हम वर्चुअल मोड में कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लाइव स्ट्रीमिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री ग्लोब चल रही है, तो यूट्यूब चैनल से ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट या इसे वर्चुअल जो भी हमारे मोड है उस पर हमारे पार्टिसिपेंट ज्यादा नहीं भी होते हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू और ऑडिटोरियम में हमारे पार्टिसिपेंट्स बैठ करके इन चीजों का आपके अनुभव का लाभ उठाते हैं। श्रोताओं, हमारे लिसनर्स एंड व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे बीच आज डॉक्टर विश्वजननी जी सतगिरी हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यूनिट जो TKDL CSIR की उसकी हेड है और साइंटिस्ट एच के रूप में वहां पे कार्यरत है। आप सभी को बता दें कि मैडम TKDL की हेड होने के बावजूद भी एक अच्छी रिसर्चर और एक अच्छी एकेडमिशियन भी रही हैं। मैडम की PhD जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से हुई थी और उनका स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहा। उसके बाद वो पोस्ट डॉक्टरल डिग्री के लिए या पोजीशंस के लिए नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय USA एंड अर्बाना कैंपेन में उन्होंने कार्य किया था। She was also associated with Smart Analyst, a market consultancy firm, and a new drug discovery research Ranbaxy laboratory. वहां पर वो बहुत से ऐसे नव अन्वेषक उत्पादों पे उन्होंने काम किया है और बहुत से ऐसे ड्रग डेवलप किए जिसको फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में लेकर के आगे बढ़ी, और ग्लेक्सो के साथ या रेंडेक्सी ग्लेक्सो का जो कोलैबोरेशन है उसमें उन प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत सफल प्रयास किया। इसमें से एक छोटा सा उदाहरण है कि COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए उन्होंने एक फेज 2 ट्रायल करके उसको सोसाइटी तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसके बाद वो हमारे CSIR सिस्टम में हमारे CSIR परिवार की सदस्य बनी, और वहां आने के बाद से उन्होंने CSIR सिस्टम में जितने भी रिसर्च के डिफरेंट थीम्स या मिशन मोड के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उन्होंने उसमें अपनी तरफ से सक्रिय भूमिका निभाई। तदुपरांत जब उन्होंने TKDL सिस्टम को संभाला और उसको संभालने के बाद से आज तक मैडम ने TKDL को न ही रिफॉर्म करने की कोशिश की बल्कि उसमें नए नए और भी स्कोप ऐड करने का प्रयास किया। विभिन्न पेटेंट्स और जो IP रिलेटेड इश्यूज है उसको रिजॉल्व करते हैं। आप सभी को शायद याद होगा कि हल्दी का एक पेटेंट को लेकर के इश्यू हुआ था, नीम का एक पेटेंट को लेकर के इश्यू हुआ था, और TKDL की ही मदद से हम लोगों ने उसमें सफलता हासिल की थी। तो TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम हमारे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है और हथियार के तौर पे हमारी सुरक्षा के IP सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। मैडम वहां पर रहते हुए न सिर्फ TKDL से हमारे IP प्रोटेक्शन को लेकर के बहुत सक्रिय रूप से कार्यरत है, इसके अलावा भी बहुत से नए स्कोप वहां पे वो एक्सपेंड कर रही हैं, जिनके बारे में शायद आपको मैडम के व्याख्यान में भी कुछ सुनने को मिले। और ये और भी अच्छी बात है, अब हमारे नव युवा जो भी वैज्ञानिक या साथी है रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ जुड़े हुए हैं डिफरेंट मोड ऑफ लिसनिंग से, चाहे वो हमारे स्ट्रीम्स में या लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। आप सभी को एक बात बता दूं कि TKDL एक ऐसा सिस्टम है जहां बहुत ही वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ मैन पावर काम करती है। वहां पर MSc इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोग काम करते हैं, PhD स्कॉलर्स भी हैं,
MBA के लोग भी वहाँ काम करते हैं, MBBS, MD, M.Pharm, आयुर्वेदा, और इतना ही नहीं और भी कई विधाएं IT से संबंधित, जहाँ के ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर मैडम के लीडरशिप में काम करते हैं। आप लोगों को एक और रोचक तथ्य बताऊं कि मैडम न सिर्फ एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, एक अच्छी मैनेजर है, एक अच्छी IT प्रोटेक्टर है, इसके अलावा मैडम खुद भी अपने आप में एक अच्छी रिसर्चर है। मैडम की 30 बहुत ही उत्कृष्ट पब्लिकेशंस हैं, और इसके अलावा पेटेंट जिसके लिए CSR जाना जाता है, मैडम के अपने हाथ में अपने खुद के 22 पेटेंट हैं। इसी सूक्ष्म परिचय के साथ मैं अनुरोध करूंगा मैडम आपको कि आप कृपया अपने व्याख्यान को हमारे बीच अपने अनुभव को साझा करें। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Srivastava, for this lovely introduction and giving me this opportunity to speak on the platform of Vigyan Sarvatra Pujyate. I will share my screen with you. Please let me know. No issue, madam. No issue, please. If you want So, to, this Science Week festival that we are celebrating under the banner of Vigyan Sarvatra Pujyate is indeed very memorable going to be. And I think I would, be indebted to CSIR and of course Dr. NDRI for giving me an opportunity to speak on something that's very close to my heart at these times. Dr. Srivastava has given you an introduction to TKDF, and that is what I'm heading. And it is a very prestigious initiative of the Government of India, and under the leadership of CSIR with the collaboration of Ministry of Ayush. I'll touch upon TKDF later part of my presentation, but it actually gives us the foundation as to why we need to preserve and protect our traditional knowledge. And I think that lays the basis for this quote that I would like to mention. A concerted effort to preserve our heritage is vital for cultural, educational, aesthetic, inspirational, and economic legacies. All of these things are quite literally make us who we are. And this was stated by Steve Berry, who is an American novelist and former attorney. And I think this particular quote is extremely apt for today's theme that talks about Swadeshi Gyan. And this is not just Vigyan, it is across various domains, and that is what our Bhakti Gyan Parampara is all about. Be it the Vedas, be it the system of medicine, be it yoga, be it food, be it metallurgy, be it archery, be it pottery making, handicrafts, or temple architectures, and alloy making. I think India has held a extremely prestigious position, in the globe, where all these domains are considered. And thanks to our ancestors, I think we are today enjoying a rich heritage of knowledge. And that is what we, very proudly say as Indian knowledge systems of Bharatiya Gyan Parampara. And if you look at, what are the sources today that we can actually look at when we are talking about ancient knowledge, much of our knowledge has been transmitted by just word of mouth, because of the Guru Sishya Parampara, and our ancestors have learned all this knowledge just by word of mouth, by reciting what has been stated in the Vedas by the Gurus, learning from them, and experiences on the ground. And we have also been very fortunate because as times advance, we also advanced in terms of technologies. We know our ancestors brought up manuscripts. It could be based on leaf, it could be based on cloth, or even metal sheets. Much of this information was also codified in terms of these tools.
such as the manuscripts. And as we advanced with time, we had been also fortunate to have much of these traditional knowledge recorded in the form of books. And today, while we speak of books, I am also informed that 80% of the books are not in print. So that means we need to also make sure that the books that we have, the manuscripts that we have, that is a codified traditional knowledge that we have, is still preserved and protected. While all this is happening, the word of mouth still maintains a very, very important role in transmitting our traditional knowledge. And that is what you see in the pictures that is there in the bottom of my slide. Even today, the knowledge holders, be it in rural areas or even in urban areas, there's community-owned knowledge or individual-owned knowledge which has been transmitted within families or through communities, and this has been held very confidential sometimes. And in more recent years, we have seen many of the research scholars going and gathering such information, that is, be it ethno-medicinal work, ethno-botanical work, or ethno-metallurgy work. Much of this knowledge has also been documented in recent times. Despite all that, there is still a substantial amount of information that is still existing by mere word of mouth. So while we are talking of the sources, why is it so important, that we are talking today about all this? So, today's, the forum that we are talking about is the Azadi Ka Amrit Mahotsav. We are going to celebrate India at 75. And as we move to India at 100, we are calling this 25-year-long period as the Amrit Kaal. So during this Amrit Kaal, what we aspire to do is that build upon our advancement, be more, stoic, Atmanirbhar Bharat. And way back in 2011, I would like to quote former President APJ Abdul Kalam, who said, in terms of the importance of history and heritage, we do understand there is a rural-urban divide in the society today. So he brings to our attention that, saying that bridging of the rural-urban divide is closely linked with the mission of overcoming poverty and inequity. So for this one, native knowledge has to be preserved and enhanced with latest tools of technology, training and research. The villages had to have access to good education from good teachers, good medical treatment, new information on pursuits of agriculture, fishery, horticulture, food processing. So with all this, what he also talks about is, once the physical and electronic connectivity are enabled, the knowledge connectivity is also enabled. And I think that is a role that SNT plays here in terms of achieving the vision of our former President Abdul Kalam. Here, I again draw your attention to the native knowledge. He says native knowledge has to be preserved and enhanced with latest tools. And I think this particular phrase is extremely important in today's context, and especially to today's lecture on Swadeshi Paramparik Vigyan. So when we are talking of it, I will first focus my attention on the health, because it says Arogyam Param Bhagyam, Swastham Swatha Sadhanam. And here, we also talk in English, we say health as well. And we have been very fortunate that in India, we have our own systems of medicine, be it Ayurveda, Unani, Siddha, Suvarika, Yoga and Naturopathy. And of course, we adopted homeopathy, though it has German origins. And when we are talking of our Indian systems of medicine, we have a huge variety of, formulations and chemical constituents that actually provide us the base for treating health holistically. And it is not just health, it is wellness as well, because food is also a very important part of our systems of medicine and health. When we talk of all this, yoga is also extremely important, because what we are talking about is fitness for maintaining good health and wealth. While we move on to the modern medicine, which emerged only during the 18th century, during the Industrial Revolution, while we look at the drugs that have been approved between the 20 years, 1981 to 2019,
close to about 1800 drugs were approved. And if you look at it, the natural product botanicals, the natural products themselves, the derivatives of it, and the limits of it constitute a substantial part of the newly approved drugs. So here, what I'm trying to draw a comparison is that while we are talking of the modern drugs, still natural products maintains a very, very important role, and that is what our Indian systems of medicine can offer in today's context of not just invention but innovation as well. I draw your attention specifically to the activities within CSIR and the expanse of activities related to Ayush. We, the institute that is hosting today's lecture of mine, NDRI, and also the sister laboratory CLAB at Lucknow, and other CSIR laboratories have all been working towards, developing new agrotechnologies, including new varieties of medicinal and aromatic plants, and also their value-added products. We also work in the area of herbal drugs, formulations, and phytopharmaceuticals. And I think in recent times we have been hearing much about the phytopharmaceutical activities as well. We have GMP preparation scale-up and pilot plant at CSIR III in Jammu, and it is one of the most important facility that we have, not only within CSIR but in the country as well, that caters to herbal formulation. One another very recent drug that has been licensed out of the CSIR is the product called Reunion, which is for bone health. This is based on Dalbergia sisu, and this particular product has been used for prevention and treatment of osteohealth related disorders. The drug, as I mentioned, is from CDRI Lucknow, and 2 clinical trials have been conducted with this particular formulation. One is a fracture healing clinical trial at Nasik, Maharashtra in 20 patients. And based on this clinical trial, the drug showed callus formation and reduced pain and edema with no adverse drug reactions. It was well tolerated in humans. Later in 2005, another clinical trial was conducted in postmenopausal women, and this was done both at Hyderabad and Mumbai, and the clinical trial indicated that the drug had anti-osteoporotic activity by reduction in serum ALT. It also showed non-decline in BMD index as well as the musculoskeletal symptoms. The drug has been licensed to 2 industry partners, that is Pharmanza Herbals in 2015 as a fracture healing agent, and very recently a company in the USA called Davita Biomimetics for the development of this particular product as per the US FDA guidelines as a botanical. So this kind of shows that, while we are talking of the scientific heritage, we need to use modern science technologies to ensure that the product results in something that is acceptable in contemporary times. Recently, during the COVID period, we also worked with the Ministry of Ayush on 4 studies. One is a prophylactic trial using ashwagandha, and this was for the prevention of COVID-19 in subjects with increased risk and healthcare providers. The other trial was therapeutic trials as an adjunct treatment of the Ayush formulations to the standard of care. Here we looked at 3 drugs, that is drug formulations, herbal formulations. One is Phenospora cordifolia with Pipalongum, that is Piperi. The second one is Glycyrrhiza glabra, and the third one is the polyherbal Ayush 64, which is a combination of Astronia scolaris, Picrorhiza, Squarcia cineata, and Caesarpenia cristra. What we had done is that we had undertaken multi-locational trials following modern medicine protocols in modern medicine Ayush hospitals across the country. So I think perhaps this will be one of the very, exemplary initiatives that we had taken, wherein Ayush formulation was used in. So the results of the I-64 is available, and if you look at it both in terms of the enrollment as well as subjects who completed the 12-week study, we saw good compliance by the subjects, and as per the results of the trial, the I-64
seems to have a decent a comparison with the control. The mean duration of recovery was between 6.5 to 8.3. Recovery within 1 week of randomization was also significant in terms of 64% ND and 64 versus the control of 52%. And based on these results, I-64 has been recommended for use in mild to moderate COVID-19 patients, and the Ministry of Ayush is distributing this drug across the country. The trials of the other two, that is Samshamani Vati and as well as Yashti Madhu, have been completed. The results are being looked into. Now, moving over to the prophylaxis trial using ashwagandha for COVID-19, what we had also seen is that as per the primary efficacy measures, which is, the proportion of COVID-19 infection-free patients on completion of the study and proportion of participants contracting COVID-19 during the period study, we saw an equivalence between the ashwagandha and the hydroxychloroquine, which is used as the control. And based on that, we feel that the Ayush, ashwagandha is a good prophylactic tool against COVID-19. In terms of the safety and tolerability, though there was no statistically significant difference between the arms of ashwagandha and hydroxychloroquine, numerically higher AEs were reported in the hydroxychloroquine arm compared to the ashwagandha. The trial is, demonstrates that, what we had kind of perceived, hypothesized, and been experiencing over years, that ashwagandha is a good immuno-boosting agent is shown through these trials, and that is what the objective of the trial was also. Now, moving over to much of our traditional knowledge, it is not related to just only the systems of medicine. We have the traditional knowledge-based products that have been developed over years as FMCG products as well. So this slide is kind of an exemplary slide based on the work of one laboratory of CSIR, that is CLAC Lucknow. And if you look at it, there is Practin, which is for tranquils and chertais, which is based on essential oils, turmeric extract, and bee wax. There's an antifungal product that has been developed based on garlic extract, menthus picata variety extract, cinnamon oil, menthol acetate, and geranium oil. There is a geranium-rich anti-dandruff shampoo. Similarly, hand and face washes, biodegradable sanitary pads, nutraceuticals, mosquito repellents, disinfectants, and pain relievers have been developed. It kind of indicates that our traditional knowledge is relevant even today based on these innovations. I move away from the CSIR work related to traditional knowledge and integration with modern sciences or validation through modern sciences. I bring to you an example of agriculture and traditional practices related to agriculture. Punam Stella is considered to be the world's oldest fermented liquid organic manure. This has been mentioned in Vriksha Ayurveda of Sirapala. It provides for a fermented biofertilizer. This is also being used as a plant growth promoter. Originally, as per the Vriksha Ayurveda of Sirapala, the Punam Stella has been made by the animal waste, because most of our traditional knowledge is all, addressing local bioresources and very low pollution of the times. It's more of, what we do in today's knowledge, we call it as circular economy. So here we are talking of Punam made of animal bones, marrow, blood, fish, etc., along with some plant-based products, namely sesame cake, germinated oat pudding, rice husk, honey and ghee. They are all fermented and used. As we moved with time, Professor Vayal Meene, way back in 2004, developed a vegetable-based version of Punam Stella. And in 2012, herbal Punam Stella was also developed, which used beads, which has both fungicidal and insecticidal activity from the fields. This particular herbal Punam Stella was extensively validated in the farmers fields across the country, and it addressed crops such as vegetable. For example, in Arunachal Pradesh and Darjeeling, it was used for tea.
And in Kerala, Rajasthan, MP, Haryana, UP, Uttarakhand, field crops, vegetable, fruit crops and flowers were validated using the productivity was validated using the herbal Kulamshela. And in essence, the Kulamshela was found to be a very robust product wherein the plant productivity increased by at least 20 to 30%. We move forward, the importance of our traditional knowledge is further validated by this particular work of MS Swaminathan Research Foundation in Chennai, and this particular traditional rice varieties that I am going to mention is from the place Wayanad of Kerala. So here, if we are talking of traditional rice varieties, I believe some articles indicate it is about 20,000, some articles indicate about 1 lakh, some articles indicate that we have more than 2 lakh traditional rice varieties. Nevertheless, the importance is that one Dr. Richaria, he had been able to collect about 19,000 of these traditional rice varieties, which is preserved even today. When we are talking of Wayanad district of Kerala, I believe there is about 75 traditional rice varieties that were best suited to this particular land type and agroclimatic conditions. However, over a period of time, the rice varieties reduced in number and it came down to about just about 20 that was being cultivated in the region. So in 2000, the MS Swaminathan Research Foundation took up the Rice Seed Village program in Wayanad, and what they focused was on validation and commercialization of economically important medicinal and aromatic rice varieties, traditional rice varieties. So in this particular case, every seed village which covered over 2 farming families conserved 3 to 5 traditional varieties of rice. And by this particular program, that is the Rice Seed Village program, over 300 farmer families were benefited and over 1,250 farmers had access to the quality seeds, that is the seeds of traditional rice varieties. So in 2008, the PPVAFRA, that is the Plant Protection of Plant Varieties and Farmer Rights Act, they recognized 20 varieties by the tribal communities of Wayanad, that is Kurichi and Kuruma, under the title Genome Saviors. 25 seed villages had been established by the MS Swaminathan Research Foundation between 2011 and 2016. This is a clear example of being vocal for local in today's context of Atmanirbhar Bharat. India had great advancements ahead of its times, even in terms of metallurgy. This particular slide is to just give you a glimpse of our ancient Indian iron making practices. Even today, the Delhi iron pillar at Qutub Minar, which is over 1,600 years old, is rust proof. So is the Dhar iron pillar in Madhya Pradesh. There are several more examples. Take the Konark temple in Orissa, or even in Karnataka and many temples in the south. We have metal-based products and metal-based interventions that stand even today's times. And here, this particular scientific report of Nature talks about an iron that is more of validation as per the modern methods about the ancient practices of iron making by the tribes Agaria. So here what they had done is that these authors are all from Australia. They collected iron samples from central India, from the Agaria tribes, and they investigated through various analytical techniques the product that had been generated by the traditional iron making practice. They focused at manufacturing steps, ingredients involved in the iron making process, post-metal treatment, all the metalworking operation has been done, especially the hot hammering, that is called the forging. And then what they had done is that they generated hypotheses on what is the probable protective mechanisms of corrosion resistance of the iron so developed. So this particular study seems to be having a significant impact on archaeology, metallurgy, and material science from ancient India.
So this, as we have been talking largely about, SNT-based technology, traditional knowledge and interventions, I also would like to bring to your attention about what we call as traditional cultural expressions. These are not also local traditions or also called the indigenous knowledge. When we are talking of traditional cultural expressions, it will be kind of a subset of what we broadly call as traditional knowledge, and it could cover, as I said, alloy works, that is more of artisans' works, textiles and embroidery, handicrafts, other softer expressions such as music, dance, and even literature. And these particular things, when we are talking of be it alloy works or textiles or handicrafts, as you see, has relevance even today because the traditions still continue in the communities that have been involved since ages. So in coming back to the title of my talk, where I said that, while we talk of traditional knowledge, it is also important that we talk about validation, connecting it with modern science and technology. So when we are talking about modern science and technology, what comes to the forefront of many of the scientific minds is when we are talking of invention and innovation, it is all about the commercialization. So invention in essence is what is something that is created that did not exist before, or it is something superior to an existing problem. It is a result of human creativity and curiosity. But when we are talking of innovation, it is about bringing the invention to the market, bringing the invention for commercialization. So innovation in essence is invention and commercialization, although we loosely use the word innovation for invention as well. So when we are talking of commercialization, from an S&T perspective, what is important in today's context is how do we protect our commercial interests? And that is where we come to the topic of intellectual property rights. What is intellectual property right? It is, a tool that legally protects our intellectual property, which could be a creation of a mind, such as inventions, literary works, artistic works, design, symbols, and many more. And some of the, very commonly used intellectual property right tools that we all hear of is about patents, trademarks, copyrights, industrial designs, geographical indications, trade secrets, and there are a few more as well. Particularly when I have to talk about patents, it is about the legal rights for inventions, and it provides about 20 years of protection of that particular invention. So during this period of 20 years, the person or the company or the organization that is holding that particular patent can claim monopoly of that particular invention. Copyrights is more to the legal rights for literary and artistic creations, and in the context of our traditional cultural expressions that I spoke to you a little while ago, copyrights generally come in view because copyright is more of the package that is generated for the literary work. It does not provide protection for the specific work that is covered under that particular compilation. Geographical indications is also important when we are talking about traditional cultural expressions. I'll come to it in a little while. So Dr. Srivatsav in his introduction talked about turmeric and how the CSIR got into the picture to protect the rights of the Indians. So here I would like to talk about traditional knowledge and misappropriation. So first let's talk about misappropriation. What is misappropriation? When somebody seeks IP ownership, intellectual property ownership over something that is not theirs. It could be indigenous knowledge of nature or originating from the communities involved, and it is for a profit. It is called misappropriation. Because what happens when a patent is granted, the person who is holding the patent has the monopoly of that particular invention. So he can prevent others from exercising that invention. So when we are talking of traditional knowledge, if somebody gives ownership of that traditional knowledge, it amounts to the kind that the community or the country that has been owning that particular traditional knowledge will now lose rights. So when we are talking of the genetic resources and wrongful use of that genetic resources for again commercial reasons, it is called biopiracy.
So in the context of, what Dr. Srivastava mentioned about turmeric and few more examples such as basmati rice and neem, what India faced in the mid-90s was a problem of misappropriation. So here, when I talk about the patent on turmeric for wound healing, it was filed in the USPTO in 1993, and the patent was also granted in 1995. And in terms of basmati rice, the patent was filed in 94, the patent was granted in 97, and the fungicidal combination of neem was filed in 91, it was granted in 1994. So India woke up to this hard reality of losing its traditional knowledge to people outside of the country, and for reasons not appropriate. And for that, we fought back. It took a lot of efforts. Many people from across the country came together to identify evidences that can be presented to the patent officers to fight the patent. So we went into patent litigation. So the efforts of the country did with fruitful results. The patent on turmeric was completely revoked in 1998. We were fortunate. In 3 years' time, we could revoke the patent. In the case of basmati rice, although we put in a lot of effort, the patent was amended only in 2002. That is, out of 20 claims, if I recall right, only 17 were revoked and only 3 were allowed. In case of neem, the patent that got filed in 91 granted in 1994, despite a lot of efforts from the country, the patent could be revoked only in 2005. So the efforts of the country that ranged between 3 to 11 years, you can see, it led to a lot of hardship because, we were on the verge of losing what we had been, kind of enjoying since generations, since thousands of years, and some of them are our daily practices as well. So in this context, how does the Indian Patent Act help to protect our traditional knowledge? One is, when we are filing a patent on a product based on traditional knowledge, it will be called a causative protection. But if the same act provides for, provisions that can help prevent somebody gaining a patent grant on a particular invention based on traditional knowledge, it will be called a defensive protection. So when we are talking of patents, everybody, I believe, in this particular audience is aware that the invention must meet 3 criteria, that is novelty, inventorship, and industrial applicability and utility. So when we are talking of novelty, it is very straightforward. Anything that is novel, that has not been known before, will be called an invention. But for a patent, is that enough? No. It also has to meet the criteria of inventorship. And what does inventorship include? It is a feature that the invention involves technical advance as compared to the existing knowledge and should have economic significance or both. And what is very important here is that the invention should not be obvious to a person skilled in the art. So in this context, what is a person skilled in the art? Say you and I have been working on traditional knowledge based on, Ayurveda. Okay, and we know that 3 particular different plant varieties individually have a particular activity. So let's say hepatoprotective activity. By combining all the 3 and saying that I have got a 5-fold enhancement in activity, would that fall under? Would that meet the criteria of inventorship? The answer would be simple no. From the perspective of I, because I am also a person skilled in the art. To me, what you have made is something obvious. So your invention does not meet the criteria of inventorship. But however, this particular combination of those 3 herbs has resulted in a 50-fold enhancement in activity. So is that obvious to a person skilled in the art? Obviously not, because we need to do extensive studies to prove that that particular formulation can result in that 50-fold enhancement in activity. And perhaps the patent examiner or the patent office will take a due call into ensuring that your invention has met the inventorship. And of course, industrial applicability or utility is important because these are all tools for commercial protection of your interest, legal tools.
When we are talking of the Patent Act 1970 of India, what also one needs to bear in mind is that there is a particular section wherein an invention for grant of a patent application should not fall under these. Those are sections 3, 4 and 5. And when we are talking of traditional knowledge, section 3 is what is most important, because under section 3T, the invention that is not patentable includes traditional knowledge. An invention which in effect is traditional knowledge, or which is an aggregation or duplication of known properties of traditionally known component or components cannot be patented. So what does that mean? I just gave you an example for inventorship. I said, 3 different herbs individually have been known to have hepatoprotective activities. But I mix all 3 and then say that, it is a good hepatoprotective agent compared to the individual ones. Not even considering the fact that, it meets the inventorship or not, this as per the section 3T cannot be patented, because this is mere aggregation of traditionally known component or components. So if in case somebody is working on such an idea, please bear in mind that our Patent Act will not allow one to file a patent application on something that is already known in our traditional knowledge. In addition to that, I would also like to draw your attention to section 3D of the Indian Patent Act. Here, the 3D again prevents inventions from being patented, and that is discovery of a new form of a known substance, say polymorph, then in terms of or a new salt, okay, or enhancement of known efficacy of the substance, by a new salt, mere discovery of a new property or new use of a known substance, or a mere use of a known process cannot be patented. So under these conditions, please bear in mind that, our traditional knowledge information comes handy in protecting the interests of the nation towards, somebody trying to claim legal ownership through a patent on something that is already known for ages. So the importance of TKDL now comes into the picture, because when I had mentioned that it took anywhere between 3 to 11 years to prevent to get the patents that have been granted revoked or amended. So what is the gap in the information? Why are patent offices across the world granting patent has been known to us since ages? It's a part of our traditional knowledge. The problem is that when we are talking of patent examiners sitting in a patent office and they are looking at your patent application and looking at, the evidence that is there, they need to be aware that that particular knowledge, that particular information that has been claimed in a particular application is known, okay? And for that, in general, every patent office, the patent examiners are mandated to look at a set of literature, both patent literature and non-patent literature, that is called the PCT minimum documentation. Through this, when your application is reviewed, they see any relevance in known publication. It is called prior art. So prior art is any evidence that the invention is already known. Once they find a prior art, the patent examiner raises a query saying that your particular invention does not seem to be either novel or does not meet the criteria of inventorship, or the use is already known through the prior art that is mentioned. Unfortunately, in our case, when we are talking of Indian traditional knowledge, the diversity of India and as well as the languages come as a gap to the understanding of the patent examiners. Even if we are looking at codified traditional knowledge, much of these books do not form part of the PCT minimum documentation, and even if they are available, they are not available to the patent examiners in our country and as well as abroad as as a structured content that they can refer to in terms of identifying the prior art. And that is when the government of India identified this gap and then decided to form the Traditional Knowledge Digital Library. So the Traditional Knowledge Digital Library serves the purpose of being a repository of our Indian traditional knowledge with the mandate to provide prior art information to patent offices to prevent grant of wrong patents
on any application that has relevance to Indian traditional knowledge. Based on the commercial interest of the time, that is way back in 2001, when the TKDL was established as an initiative of the CSIR and Ministry of Ayush, we embarked upon including information from the Indian systems of medicine. So currently the TKDL contains information of Ayurveda, Unani, Siddha, Yoga and Sovarika. And so far we have transcribed close to about 4 lakh such formulations, including the yoga techniques. And here what we have used, because it is a prior art database for patent offices, we convert the metadata of the TKDL is in the form of TKRCs, that is Traditional Knowledge Resource Classification Codes. This is a structured content. So to enable the patent officers, the patent examiners to search the content of the database in terms of the traditional knowledge. And this particular database is available in 5 languages, that is English, French, German, Japanese and Spanish. The access as per the Government of India approvals is given only to the patent officers that have signed access agreement with us. So far 14 different countries, that is patent officers of 14 different countries have access to the TKDL database. In addition to that, we also file pre-grant oppositions and third-party observations at select patent offices based on the TKDL evidences. This particular activity, that is by the patent officers and as well as the TKDL, has led to patents being amended, revoked, withdrawn or abandoned by the inventors themselves. So this is what I have covered so far is the defensive protection of traditional knowledge. While it is important to defend and make sure that people do not claim wrongful ownership of our traditional knowledge, we need to also understand, and as I had mentioned, communities are involved in traditional knowledge. Okay, so they need a positive protection. Some of the tools that are available even legally in India, towards positive protection, although not exactly positive protection, one is the geographical indication. Geographical indications are also legal provisions. It is an IPR tool, and way back in 1999, India had enacted the Act. And the geographical indications are goods or products, which are attributable to a particular geographical location in the country. So it need not be only bioresource based. It can be, anything like a Tanjavur painting, or it could be Udupi Mallige, it could be Darjeeling tea. So everything is associated with a particular location. The good thing about geographical location is that it provides a brand value to the person holding that particular geographical indication because it goes with a GI tag. And here, unfortunately, here the traditional knowledge that is part of this particular geographical indication is not covered under the legal tool, that is a geographical indication, because it is more like a collective or a certification mark. It is provided for 10-year period and then it can be renewed. Unlike patents which can be licensed out, the geographical indications cannot be licensed out because it needs to belong to the authorized producers of that particular geographical location. This is to maintain the characteristics of that particular product which is attributable to its location. One another important part of the IPR tool is the industrial designs. So here designs cover shapes, configurations, pattern, ornament and composition, and it can be either 2-dimensional or 3-dimensional. Some of the things that, even this provides for a 10-year protection with additional 5-year renewals. It can be licensed or sold, and some of the grassroots innovations that we talk of are protected by the industrial designs. This is again a form of positive protection of our traditional knowledge of grassroots innovations. I did mention about the protection of new plant varieties, and this is under the Protection of Plant Varieties and Commerce Right Act, which was enacted in 2001 by the Government of India. This is again, this is a legal tool for the protection of plant varieties, and it ranges anywhere between 15 to 18 years. It is not only providing rights to the farmers and the plant breeders, it is also to stimulate investment for research and development so that new, better varieties of the plant materials are produced.
and it also ensures quality seeds and as well as planting materials. So this is one way of protecting our traditional bioresources. The last but not the least is, comes under the Biological Diversity Act 2002. Here, this particular act, which is enacted by the National Biodiversity Authority, that is the NBA, provides the regulation of access to the biological resources and also its associated knowledge. So here there are norms that are stipulated for access to the biological resources. So depending on whether you are a foreign citizen or an Indian citizen, it is either approval is required or a prior intimation is required. Here, for especially the SNT community that has gathered here today, what I would like to mention is that the results of research is not to be transferred to certain persons without the approval of the NTA. And when we are seeking intellectual property rights based on bioresources, it needs to be made with the approval of the NBA. There are several forms that have been mentioned by the NBA on their website. Please go have a look at it. Of particular importance to today's talk on intellectual property rights, there is Form 3, that is applying for the intellectual property rights for inventions based on research or information of a biological resource from India. And this has to be filed by both Indian and non-Indian individuals as well as entities. But when we are talking of traditional knowledge, so far what I had mentioned is bioresources. How is traditional knowledge protected under the Biological Diversity Act? So like how we are doing at TKDL, that is, collecting information from codified text. What the NBA does, NBA is the highest authority. Under them comes the state biodiversity boards, and then you have the biodiversity management councils that act at either the panchayat or the village level. The biodiversity management councils, that is the BMCs, have been authorized and made responsible to collect information of the bioresources used locally at their levels, and they create what is called the People's Biodiversity Register. So this is more of a register of information of bioresources and as well as their associated traditional knowledge use. And this again is based on two very important aspects. One is prior informed consent, the second one is the access benefit sharing mechanism. So when we are talking of TBR, collecting information from the local, one needs to ensure that we follow prior informed consent, that when we are taking information towards documenting information from of traditional knowledge from either individuals or communities, we explain to them in detail what is important, in terms of, their rights and our rights when we are collecting that information. And also when it is used for an R&D purpose or for commercialization, the benefit arising out of such access needs to be shared with that particular individual or community. So this is all under the Biodiversity Act 2002. So in essence, I'm coming very close to closing my talk. I think I've exceeded my time as well. So when we're talking of protection of traditional knowledge and cultural expressions, including grassroots innovations, we need to understand that there are twofold. One is a defensive protection, as I had mentioned. TKDL is a tool for defensive protection of our traditional knowledge. It protects the traditional knowledge from not being given away to any third party for misuse, for commercial interest. But what is also important, as I had mentioned, because of the the nature of the communities that are involved in such traditional knowledge, positive protection is also important. So far, only very few countries in the world have sui generis systems, such as Peru, Ghana, and others. India does not have a sui generis law for protection of the traditional knowledge related to communities, and it's important that we ensure that the positive protection that helps to protect and promote the traditional knowledge of communities is also looked into. But as researchers, what is important for us when we are talking of oral traditional knowledge is that when we are talking about community or individual based knowledge, this is not being codified so far. We need to handle this information with due respect and sensitivity because it is related to the people's rights. Okay, so one needs to have good responsible documentation practices.
So first, as I had mentioned, is the free prior informed consent. Here, one needs to ensure that we understand the interests and concerns of the knowledge holders. We also define the objectives of our interaction with the community, if it is for documentation purpose, if it is for research purpose, if it is for, accessing the bioresource, we need to mention why we are accessing that particular knowledge and resource. And we also need to specify the roles of the persons. Say, for example, I am going and collecting some information. I need to tell the knowledge holder why I am collecting and documenting such information, and whether he consents to provide us that information, either in part of, to what extent can we disclose this information to a third party. All that needs to be defined when we are taking this informed consent. The next very important from a researcher's perspective is the acknowledgement. Very often, when we do even ethnobotanical work or ethnomedicinal chemistry work, we forget that the knowledge holders have been the foundations of such knowledge. Every day we go about publishing such information with little regard for the contributions of the knowledge holder. So here I would like to draw your attention to the fact that when you are doing such work, make sure that the community involved, the individuals involved, are either given authorship, inventorship, partnership, or all when we are doing research and making use of such information for value-added products in our research endeavors. The last but not the least is the access benefit sharing that I had mentioned even before, that under the NDA, it stipulates that, once you access the information or the bioresources, the benefit is also shared with the concerned communities. Here, we need to have robust mechanisms where the terms and conditions of the access is mentioned, include what is the modalities of the benefit sharing. Not only that, it is also incumbent upon us that the knowledge holders are informed and updated on the developments that we make towards research and development and So the last of my slide, I again bring back to the original quote that I made at the start of my talk. That is, a concerted effort to preserve our heritage is a vital link to our cultural, educational, aesthetic, inspirational, and economic legacies. All of the things that quite literally make us who we are. And I think India stands testimony to that. We are today because of our ancestors, because of our traditional knowledge. Make sure that we preserve and protect it. And in today's context of Atmanirbhar Bharat Abhiyan, from a scientific perspective, it is important that we consider integrating and co-opting diverse knowledge fronts, be it traditional knowledge, be it folk knowledge, be it modern science, and this is going to be critical and will lay the foundation for not only our present times, but the future as well. Thank you so much for the opportunity, and I think I have overshot my time, and sorry for that. Thank you, Dr. Satagiri, for such a wonderful talk. Indeed, it was an outstanding talk from an excellent speaker. Thank you so much, ma'am. I now request Dr. Sachitra Raj to give the vote of thanks. Over to you, sir. सभी को नमस्कार। माननीय वक्ता को विनम्र धन्यवाद। डॉक्टर विश्वजननी सतगिरी CSR पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यूनिट का जो प्रमुख हैं, जिन्होंने स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान को लेके विज्ञान के माध्यम से कैसे वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, कंजर्व करना और पेटेंट को कैसे बनाना है और पेटेंट को कैसे कंजर्व करना है, ये हम सबके को आज एक आलोकपात किए हैं, जो कि हम सारे यूथ से लेके जितने भी यहाँ पे MS टीम के माध्यम से या फिजिकली हो या जो लोग भी सुन पा रहे हैं, ये सबको एक अवसर मिला है, जो कि अपने आप को एक भारत की जो ट्रेडिशनल नॉलेज के नाम पे हम गर्वान्वित होते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक मौका मिलेगा। और इसी संदर्भ में आप यहाँ जो कोई भी जोड़े हैं, मैं सबको धन्यवाद हृदय से देता हूँ। और आगे इस संदर्भ में जो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते की है, जिस टॉपिक पे हमने एक हफ्ता भर की कार्यक्रम ले रहे हैं, जहाँ पे आज मैडम ने इसको साकार एक महत्वपूर्ण दिशा में बदल दिए हैं, तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Raj. I have one line to say to ma'am. It was really an excellent talk by an outstanding scientist of our CSR family.
So we are highly indebted of you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Srivastava, for the opportunity. It was my pleasure too. Thank you. Thank you so much, ma'am. Over to you, Dr. तो इस कार्यक्रम के आज की जो लेक्चर सीरीज था, इस कार्यक्रम का आज इसमें अविराम होगा और हम सब बाहर जो स्टॉल है, मंडप है, वहां पे जाके फिर ज्वाइन करेंगे। Okay, Dr. Now we have Dr. Manish Tiwari with us, who is going to introduce us to the next short talk. It's a flash talk that we have organized. So please stay tuned. Over to you, Dr. Tiwari. Hello, welcome to you all, and now I request Dr. Manish Tiwari to introduce our next speaker. Please, sir. Thank you, Dr. Bhoyar. Very good afternoon to all of you. जैसा मैं देख रहा हूँ कि हमारे ऑडिटोरियम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के साथ
थोड़ी सी प्रॉब्लम उनकी लर्निंग वगैरह में, जैसे कुछ क्लासरूम लेक्चर्स ऐसे याद करने में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स ऐसे होती है। सो हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर देवेश शुक्ला, सो ही इज़ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, और आज आप लोगों को कुछ टेक्निक्स और टूल्स बताएंगे कि कैसे एफिशिएंटली आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सो नाउ डॉक्टर देवेश शुक्ला, प्लीज़ come on dais, and now it's over to you. कैसे चलेगी? स्लाइड कैसे चलेगी? ये तो चल नहीं रहा है। कॉर्ड है ना उसमें? Okay, I think it's 12 o'clock, right? Good afternoon, everybody. कैसे हो तुम लोग? अच्छा, तो आप लोग मेनली किस क्लास ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो? 11th. Okay, nice. हाँ, sorry? PGMC, very nice. Okay, so this topic is how to learn faster and deeper. So नीचे कुछ लोग पूछ रहे थे कि deeper क्या? तो कैसे आप कोई भी नई स्किल को बहुत तेजी से और गहराई से सीख सकते हो? So what is that technique that allows you to learn faster and deeper? Now in a word, the science gives that protocol which allows you to learn faster and deeper. That is called neuroplasticity. हम लोग जो भी देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन पता है सबको न्यूरॉन्स से बना है ना? There are trillions of neurons, and neurons fires. They fires and they wire together. Fire and wire together. जब भी आप कोई चीज नई चीज पढ़ते हो, नई स्किल सीखते हो, मान लो आप पियानो सीख रहे हो, आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो जब भी आप कोई नई स्किल, आपको स्केटिंग सीखनी है या आपको स्केटबोर्ड, कुछ भी नई स्किल सीखनी है, तो ब्रेन नए न्यूरॉन्स को फायर करता है डिफरेंट पैटर्न में, और जब आप वो सीख जाते हो तो वायर टुगेदर हो जाता है, एक पैटर्न फिक्स हो जाता है। उसी को कहते हैं लर्निंग। लर्निंग है क्या? ब्रेन में न्यूरॉन्स का एक पैटर्न है फायरिंग का, और पर्टिकुलर न्यूरॉन्स को एक आपस में कनेक्शन है, वो होता है लर्निंग। That is called plasticity. तो हमारा ब्रेन बहुत प्लास्टिक है, मतलब बहुत मॉड्यूलेट, कुछ भी हम सीख सकते हैं। It takes time, but कुछ भी हम सीख सकते हैं, तो कैपेबिलिटी हमारे अंदर है। That is called fire and wire together. तो एक प्लास्टिसिटी की एक प्रोटोकॉल है। यार साइंटिस्ट, तो हम लोग हर चीज का एक प्रोटोकॉल देते हैं, जैसे डीएनए आइसोलेशन करना है, आरएनए आइसोलेशन करना है, देयर इज प्रोटोकॉल्स, आप वो प्रोटोकॉल फॉलो करोगे रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही नाउ द 21st सेंचुरी में अभी की ये रिसेंट देयर इज अ प्रोटोकॉल डेवलप हो चुकी है, कैसे आप एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करेंगे आप कोई भी चीज सीख सकते हैं। तो ये जो टूल मैं आपको देने जा रहा हूँ, यू कैन यूज इन रियल टाइम इन एनीवेयर, इन मैथमेटिक्स, इन साइंस, इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन म्यूजिक, whatever is skill you want to learn, you can learn it using these protocols. Right? Clear? So the first step of the neuroplasticity is कोई भी चीज सीखने के लिए पहले
पहली चीज है फोकस। फर्स्ट चीज है, अब मैंने जैसे ही आपसे बात की, अभी तक आप लोग इधर उधर बात कर रहे थे, नाउ यू पीपल आर गेट अलर्ट, अब आप फोकस हैं। सबसे पहला स्टेप है आप अलर्ट हो गए। तो फर्स्ट स्टेप है कोई भी चीज सीखने के लिए, फर्स्ट यू नीड टू गेट अलर्ट, अवेक, अलर्ट। इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं अलर्टनेस में। दो सिस्टम होते हैं नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं है। तो जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो है पैनिक से लेकर के अलर्ट तक की चीजें कवर करता है। मतलब जब आप या तो पैनिक हो, बहुत ज्यादा पैनिक हो, तो भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा होगा। फिर अगर आप अलर्ट हो जाएंगे तब भी हो रहा होगा। जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता है रिलैक्सेशन। आप बहुत काम है, ड्राउजी फील कर रहे हैं, सो के उठे हैं या सोने जा रहे हैं, उनको नींद में, तो उस समय पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। तो जो अलर्ट है वो एक तरह का बैलेंस, एक सीसा है पैरासिम्पैथिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में। यू हैव टू बी इन ए बैलेंस पोजीशन। ना तो आप बहुत ज्यादा अलर्ट होंगे तो आप चले जाएंगे पैनिक स्टेट में, अगर आप बहुत ज्यादा स्लो हैं, बहुत रिलैक्स हैं, तो आप सो जाएंगे। इट्स लाइक काम और आप सो। तो अलर्ट की पोजीशन है, एक सीसा है जिसमें आपको बीच में रहना है। ना तो बहुत आपको अलर्ट, बहुत ज्यादा पैनिक होना है, ना बहुत ज्यादा ढीले खुला होना है। तो एक अटेंटिवनेस होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है आप अलर्ट हो जाइए। उसके लिए एक सिंपल प्रोटोकॉल है। क्या करेंगे आप 20 to 30 डीप ब्रेथ लीजिए। 20 to 30 आप सांस लीजिए। कहें मतलब आपको अगर तुरंत अलर्ट होना है, जैसे आप कहीं किसी और पोजीशन में और कुछ इमरजेंसी आ जाए, कुछ या कुछ आपको सीखना, आपको तुरंत अलर्ट होना है, कैसे? तो रियल टाइम टूल क्या है वो ये, आप 20 to 30 डीप ब्रेथ लीजिए, सिंपल 20 से 30। फिर लास्ट में आप एक्सेल कर लीजिए, पूरा ब्रीथ बाहर। लास्ट आफ्टर 30 ब्रेथ, जो लास्ट ब्रेथ होगा आपको पूरी ब्रीथ आप बाहर करिए, होल्ड करिए। इस पोजीशन में आपके लंग्स एम्प्टी रहेंगे। ठीक है, आप होल्ड करेंगे। कितनी देर होल्ड कर सकते हैं आप? 30 सेकेंड्स, कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन यू, एज मच एज यू कैन, बट बी कंफर्टेबल। ज्यादा नहीं, जबरदस्ती नहीं। तो आप 1 मिनट, 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप फिर आप छोड़ दीजिए रिलैक्स, फिर आप ब्रीथ इन कर, ब्रीथ आ जाएगी अपने आप बाहर। एक्सेल करेंगे ना, तो उसके 1 मिनट के बाद आपको सांस लेनी ही लेनी पड़ेगी, आप लेंगे। दिस विल मेक यू अलर्ट इंस्टेंटली। कुछ भी आप कर रहे होंगे, कहीं भी आपका तुरंत आप अलर्ट पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या करता है, देयर इज अ टू न्यूरो वो है एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनलिन हार्मोन्स है, वो बॉडी में रिलीज होगा, है ना? ये पढ़े ना तुम लोगों ने? हाँ, तो ये द अलर्टनेस कम्स फ्रॉम द एड्रेनलिन। सेम थिंग है, एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन इज द सेम थिंग। एड्रेनलिन बॉडी में उसको हम एड्रेनलिन कहते हैं, और ब्रेन में भी होता है सीधे, तो ब्रेन में होता है उसको कहते हैं एपिनेफ्रिन। इट गिव्स यू अलर्टनेस। तो यूजिंग दिस प्रोटोकॉल आप अलर्ट हो जाएंगे। और ये प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द all the experimental data, and this protocol is introduced by Dr. Andrew Huberman, Stanford University School of Medicine. He gives that protocol. Further आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। Andrew Huberman, hubermanslabs.com. Huberman, the eyes हमारी है, ये brain. Huberman, the eyes हमारी है, ये brain है. It's a part of brain. Even actually, it's itself a brain which is coming out simply in the socket. It's a brain. तो जब हम किसी चीज को फोकस करते हैं, देखते हैं, 60 सेकंड देखते हैं विदाउट इंटरप्शन, तो हमारा मेंटल फोकस भी आ जाता है। तो ये टूल है उसका गेट फोकस। इसको करने में आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी है, दैट यू विल रियलाइज। जब आप करो तो लगेगा कुछ इधर उधर जा रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन आपको फोकस रखना है 60 सेकंड्स तक एटलीस्ट। और ये फोकस में अगेन हार्मोन कौन सा निकलता है? एसिटिल जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ना, एसिटिल। तो जब आप फोकस करते हैं 60 सेकंड्स में, तो एसिटिल रिलीज हो जाता है। दैट हेल्प्स यू टू फोकस। मोबाइल वगैरह फोन छोड़ करके आप अलग रख सकते हैं, वेब ब्राउजर वगैरह, किसी भी चीज को सीख रहे हैं अगर आप, तो
फोकस में ये सब इंटरप्शन है। मोबाइल आप ऑफ कर दीजिए, घर पे हैं वहाँ या क्लासरूम में हैं, मोबाइल ऑफ, वेब ब्राउजिंग ये सब ऑफ कर सकते हैं। ये फोकस में इंटरप्शन है ना, वो लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? आफ्टर फोकसिंग, जनरेट रिपीटिशंस इन ए टाइम और टाइम ब्लॉक। जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक गिवन टाइम ब्लॉक में आप कितनी बार पढ़ सकते हो? रिपीटिशन करेंगे आप। तो ये एक पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मत बुद्ध सुजान। मतलब कि रिपीटिशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज को सीखने के लिए। कोई भी नई चीज जब आप सीख लेंगे तो उसको तुरंत नहीं आ जाती, उसको थोड़ा रिपीट करना है। दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन एज मच एज यू कैन। और व्हाइल रिपीटिशन यू विल डू एरर्स, एम्ब्रेस एरर, नो प्रॉब्लम। एरर होंगी, गलतियां होंगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होंगी ही होंगी। आप ही की नहीं, दुनिया में कोई भी हो, जब भी कोई नई चीज सीखेगा वो एरर करेगा, बट यू नीड टू एम्ब्रेस एरर, नो प्रॉब्लम। बट यू नीड टू रिपीट दैट प्रोसेस इन ए पर्टिकुलर टाइम पॉइंट, इन ए टाइम ब्लॉक, लाइक 1 मिनट। और जितना जल्दी आप रिपीट करेंगे उतना आपकी जो ब्रेन की ड्रिफ्टिंग होती है, इधर उधर जो ध्यान जाता है वो नहीं होता। अगर आप फोकस करके जल्दी रिपीट करेंगे तो जो ब्रेन की ड्रिफ्टिंग है इधर से उधर जाने की, वो कम जाएगी, आपका फोकस बढ़ेगा। तो आपको रिपीट करना, ठीक है। ट्राई टू रिपीट ऑपरेशन ए लिटिल फास्टर देन इज नेचुरल फॉर यू। मतलब जो आपके लिए नेचुरली आप जो करते हो उससे थोड़ा फास्ट करें। नेचुरली जो आप करते हो उससे थोड़ा फास्ट, जैसे आप पढ़ते हो थोड़ा सा फास्ट आप थोड़ा। एरर होगी, एरर को एम्ब्रेस करना है, तो वो फोर्थ में आता है। नेक्स्ट टेस्ट, extract and embrace that. This sharpen focus by enhancing prefrontal cortex. Prefrontal cortex है आपने, that is the most important part. That is the creativity. All the creativity, all the innovations, all the important things come from this part. When you embrace errors, prefrontal cortex activate. वो आपका सक्रिय हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो और गलतियां करते हो और ठीक है एक्सेप्ट करते हो गलती की मैंने, फिर करेंगे, जब ये वाली जैसे ही आपकी कॉन्शसनेस की स्टेट आती है वहां पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है और आप बहुत जल्दी जल्दी सीखने लगते हो। वो सारी चीजें कन्वर्स होके स्पीड अप होने लगता है। जैसे ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, वो एक्टिवेट कब होता है? जब आप गलतियां डरो नहीं, गलती हो गई अब आप छोड़ दिया, आप डर गए, हट गए, या आप किसी ने डांट दिया, ना वहां पे डर। जैसे ही गलती होगी ठीक है वो होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। आपने एम्ब्रेस किया, सीखा और आप करते चले, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरर्स ड्यूरिंग लर्निंग बेनिफिशियल एज लॉन्ग एज दे डू नॉट कंप्रोमाइज सेफ्टी। ऐसा नहीं है कि आप सेफ्टी ना कंप्रोमाइज हो, इतनी एरर नहीं है कि कोई आपका रिस्क है, जैसे आप कार चलाना सीख रहे हैं तो एरर वहां तक है जहां तक आपकी सेफ्टी ना, एक्सीडेंट ना हो, इतनी एरर नहीं करनी है, सेफ्टी कंप्रोमाइज ना हो, बाकी जितनी एरर है ठीक है एक्सेप्टेबल। दिस इज द इनकम फ्रॉम द 21st सेंचुरी। ये वाली चीज अभी तक, बाकी चीजें तो हम लोग जानते थे भाई, फोकस करना हम लोगों को पता था, मोर और लेस पता, बहुत पुराने से पता है। अर्जुन से पूछा गया कि क्या दिख रहा है तो उसने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिख रही थी, तो दैट इज कॉल्ड फोकस। तो 5-6 साल से पता है कि कोई पेड़ भी देख रहा है, कोई चिड़िया देख रहा है, कोई चिड़िया की आंख देख रहा है, जो चिड़िया की आंख देख रहा है वो सबसे ज्यादा फोकस है। लेकिन ये जो चीज है ये अभी पता चली, ये क्या है? रैंडमली इंसर्ट माइक्रो रेस्ट इंटरवल, इंक्रीज न्यूरल रिपीटिशन। ये सेल रिपोर्ट एक्सीलेंट जर्नल है, पेपर है, इसमें क्या इन्होंने किया, कंसल्टेशन ऑफ ह्यूमन स्किल लिंक टू वेकिंग हिप्पोकैम्पो नियोकॉर्टिकल रीजन। पियानो सीख रहे थे बहुत सारे लोग, तो उन्होंने पियानो सीखने में उन्होंने 10 सेकेंड्स का एक सीखने के दौरान ही 10 सेकेंड का एक इंटरवल देते। उस 10 सेकेंड में आपको कुछ नहीं करना, दैट इज कॉल्ड माइक्रो रेस्ट इंटरवल। कोई भी चीज आप सीख रहे हैं, कोई भी चीज क्लासरूम में, टीचर या स्टूडेंट, टीचर अगर पढ़ा रहे हैं वो या स्टूडेंट, 10 सेकेंड का रैंडमली है ना, कभी भी रैंडमली स्टॉप कर दो, पॉज कर दो, साइलेंट, जैसे अभी चला पॉज हो, डू नथिंग, क्लोज योर आइज,
क्या होता है, ये जो रिसर्च है ये बता रही है, जो भी चीज आप सीखते हो वो मेनी टाइम फास्टर, कितने टाइम है 20 फोल्ड लिखा हुआ, जो भी चीज आप सीखते हो 20 फोल्ड फास्टर आपके ब्रेन में रिपीट होता है। ब्रेन में एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, आपने पढ़ा होगा। जो भी चीज आप सीखते हो, आप जैसे ही आपने रेस्ट किया 10 सेकंड का, बीच में इंटरवल दिया, अब वही चीज ब्रेन में कंप्रेस होकर चल रही है आपकी, जैसे रील की तरह नहीं सीधी घूम रही है, वो सेम पूरा का पूरा प्रोसेस 20 फोल्ड फास्टर चल रहा है। अब यहाँ पे वो एनहांस हो गई क्योंकि आपने रेस्ट दे दिया, वो ब्रेन में 20 टाइम फास्टर रिपीटिशन, तो लर्निंग बढ़ जाएगी। आप समझ सकते हो, कोई चीज 20 टाइम फास्टर रिप्ले हो रही है, बढ़ जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो ऐसा होता है। ये रिसर्च में निकला, पूरा पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, लेकिन ऐसा होता है, ये आउटकम यही है। 10 सेकंड का इंटरवल दिया, 20 टाइम फास्टर रिपीट। दैट इज न्यू थिंग इन दैट दिस पेपर इज पब्लिश्ड रिसेंटली in this 2020. Now this is after learning. This is very important. Now 6 is the use random intermediate rewards for himself. Teacher भी के लिए भी है कि वो स्टूडेंट्स को रैंडमली रिवॉर्ड करे किसी भी चीज सीखने के। मतलब स्टूडेंट को ये नहीं पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो ये साइंटिस्ट या ये टीचर मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये तय नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रैंडम। अगर एक्सपेक्टेशन है और रिवॉर्ड नहीं मिला तो उसको कहते हैं रिवॉर्ड प्रेडिक्शन है, वहाँ वो बोलना है ना। उसको कब रिवॉर्ड देना है स्टूडेंट को नहीं पता होना चाहिए, वो रैंडमली टीचर देगा, या वो हिमसेल्फ अगर इवन हिमसेल्फ भी देना चाहता है अपने को एप्रिशिएशन तो मत दे, कभी कभी छोड़ दे, नहीं देना, मुझे बहुत अच्छा काम किया, मैंने कोई रिवॉर्ड नहीं, इट्स फाइन, दैट विल गिव यू मोटिवेशन। रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर इज द वर्स्ट, वो होता है जब पूरा डिमोरलाइजेशन। तो ये टीचर्स को और तुम लोग को भी अपने को भी देना है ना शाबाशी, तो वो रैंडमली देना है, कभी देना है कभी नहीं देना। उसी को कहा है कि कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, इट इज हार्ड वायर है ये आज की बात नहीं है। अब हमने साइंस से इसको देखा, साइंस से पता चल गया कि ये सर्किट जो रिवार्ड है वो डोपामाइन सर्किट है। डोपामाइन इज द मॉलिक्यूल ऑफ रिवार्ड और मोटिवेशन। जब हमें मोटिवेट कोई चीज करनी होती है डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है, दैट इज हार्ड वायर। तो ये चीज अब पता चली, लेकिन है वो पुरानी चीज कि आप वही कर्म करो, देयर इज नो रिवार्ड, मतलब आपको मिलेगा आपको, लेकिन यू शुड नॉट एक्सपेक्ट द रिवार्ड, राइट। दैट इज रिवार्ड use randomly intermittent reward. Sometimes no reward within a system. Sometimes the neural circuit that regulate reward are closely linked to the circuit that controls motivation. Motivation जो हमें उत्साह, जो हमें मतलब किसी चीज को कराने के लिए जो डिजायर चाहिए, वो रेगुलेट कहाँ से होता है? रिवार्ड से रेगुलेट। रिवार्ड मिलेगा तो वो, अगर रिवार्ड नहीं मिला तो वो मोटिवेशन चला जाएगा। तो इसलिए रिवार्ड रैंडम होना चाहिए, कब आएगा कब मिलेगा पता नहीं, मुझे मतलब नहीं, मुझे अपना काम है। मेक इट रैंडम। रैंडम इज द अनप्रेडिक्टेबल एंड इंटरमीडिएट इज द की इंपॉर्टेंट। लिमिट द लर्निंग ट्रिगर सेशन। ट्रिगर सेशन मींस मान लो आपने म्यूजिक सीखने जा रहे हैं, तो जो ट्रिगर फर्स्ट सेशन होगा दैट इज द ट्रिगर सेशन, तो वो 90 मिनट और लेस होना चाहिए, तो आप सीख पाओ। कोई भी लेक्चर कुछ भी 90 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च से निकल के आया है, कम से कम थाउजेंड्स पेपर आ चुके होंगे जो ये निकल के इससे आता है कि कितना देर आप सीख सकते हो, कितनी देर आपकी अटेंडेंस हो, 90 मिनट्स और लेस, नॉट मोर देन। और बिटवीन द सेशन 2 to 3 आवर गैप होना चाहिए। ये भी नहीं कि एक बार 90 मिनट आया फिर फटाक से दूसरा आ गया ना, देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 to 3 आवर ईच में स्पेस, तब आप सीख पाओ। सीखने का प्रोसेस है वो वही है, भले आप हो रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन आप सीखोगे जब भी 90 मिनट लेस प्लस स्पेस 2 or 3 hours. That solid research shows that 90 minutes is about the longest period we can expect to maintain intense focus, effort toward learning. तो उससे ज़्यादा फोकस आप रख ही नहीं सकते। अभी मैं 90 मिनट से ज़्यादा बोलता रहूँगा, 90 मिनट के बाद आप जब देखने का जो फोकस है वो खत्म होने लगेगा, इधर उधर करने लगोगे, खत्म होगा बस।
वो एक स्टेज है, सबका कॉमन है, वो रिसर्च से निकल के आया, उसमें कुछ नहीं, फिक्स है 90 मिनट और लेस। More important thing, most people can't do more than 270 minutes of intense or learning sessions per day. Now, incorporate 10 to 30 minute NSDR post learning figure session, mindfulness session. अभी जैसे मैं कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद आपको 10 to 30 minutes NSDR या माइंडफुलनेस में अगर आप चले जाए तो दैट इज द बेस्ट, पूरा सीख लोगे आप, पूरा चला जाएगा। तो ये NSDR है क्या? दिस NSDR टर्म इज कॉइन्ड बाय एंड्रयू डुबर्ग। जितना हमारा ध्यान, योग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब एक ही वर्ड के अलग अलग वर्ड्स हैं। तो देयर इज ए अम्ब्रेला टर्म इज नॉन स्लीप डीप रेस्ट। आप रेस्ट जो लेवल है वो वही होगा जो आपको नींद में आता है। When you slept, you are just rest, complete rest is sleep. But ध्यान में आप रेस्ट में तो होते हो, लेकिन बस होश नहीं आपका होता है। नींद में क्या होता है, आप गए भूल गए आपने। माइंडफुलनेस में क्या होता है, आप सोते तो हो लेकिन आपका होश का दिया जलता है। You just somewhere you need to be just awake. बाकी तो सो रहे हो, लेकिन कहीं तो आपको पता होता है। That is called meditation. That is called NSDR. That is called mindfulness. Whatever the name ABC you want to give, what doesn't matter. But thing is that you need to be in a state of relaxation, total relaxation, but awake. सोना नहीं। That is called NSDR. तो किसी भी लर्निंग सेशन के बाद अगर 10 to 30 मिनट NSDR प्रैक्टिस कर लो या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर लो तो that is very beneficial for the neuroplasticity. For your learning. Paper published हुए, this is supported by these two papers. Replay of learned neural firing sequence during the rest of human motor cortex. Post training meditation promotes motor memory consolidation. Both is supported by the paper. समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन है इसमें? Now come to the sleep. किसी भी लर्निंग में, न्यू स्किल सीखने में जब सारा हो गया पूरा दिन, तो रात की जो नींद है, क्वालिटी ऑफ स्लीप, सोने की जो आपकी गुणवत्ता है, जो कितना गहरे आप सो सकते हो, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, दिन भर आपका गड़बड़ है। तो 6 से 7 घंटे की स्लीप है ना, जितनी गहरी हो उतना अच्छा है, अगले दिन के लिए आप अच्छा सीखोगे। और जो रिसर्च है वो यही कहती है कि जो दिन भर सीखा है ना, दिन भर जो हमने किया है वो रात में सारा रिप्ले होता है ना। पता है कैसे? पता है, लगता है समझे आते हैं, किसी किसी को आते, किसी को याद नहीं रहते, लेकिन दिन भर जो आप वो सब रिप्ले होता है। कभी कभी वो आपको पता होता है, जिसको नहीं भी पता है, नहीं भी आ रहा है तो होता, लेकिन है वो दैट इज रैम्स। इसका जो ये लिखा है ना, एक्चुअल रीवायरिंग ऑफ न्यूरल कनेक्शन ऑकर्स ड्यूरिंग, तो एक्चुअल लर्निंग जो है ना वो नींद में होती है। आपने दिन भर एफर्ट की लेकिन नहीं सीख पाए, अगले दिन सीख जाते हो या उसके नेक्स्ट डे आ जाता है। तो जो एक्चुअल लर्निंग होती है वो डीप स्लीप होती है। अगर तुम्हारी स्लीप सही नहीं है तो तुम सीख नहीं पाओ। तुम्हारी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद में कोई डिस्टर्बेंस मत डालो, सारे मोबाइल सब कुछ हटा दो, पहले से ही 2-3 घंटे पहले से ही जाओ, सोने जा रहे हैं, साइलेंट होना चाहिए, अंधेरा। स्लीप बहुत है, जब नींद अच्छी आ रही है तो लर्निंग का प्रोसेस अपने आप एनहांस होता चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई क्वेश्चन है विदाउट? उसके बाद गड़बड़ होता है ना, एग्जाम टाइम में रात में पढ़ाई करना मतलब यू आर जस्ट डूइंग द वर्स्ट थिंग फॉर योर न्यूरोप्लास्टिसिटी।
आप याद कर लोगे सुबह लिख भी नहीं पाओगे। कुछ लोग लिख लेते होंगे, कुछ नहीं लिख पाते। लेकिन जो एक जनरल एक मेथड है, जो हार्ड वायर न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो ये कहती है कि नो, वो मैं बताऊंगा। अब देखो इसको समराइज कर दो। न्यूरोप्लास्टिसिटी सुपर प्रोटोकॉल गिवन बाय डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबर है क्या? ये सब यूट्यूब पे है, चिंता मत करो, सब रहेगा। 9 स्टेप्स है, ठीक है? 1, 2 और 9 अनकम्प्रोमाइजेबल, मतलब इनको आप नहीं छोड़ सकते। बाकी के आप छोड़ सकते हो, मतलब आप क्लासरूम में आपको मैथ का टीचर पढ़ा रहा है, वो 10 सेकेंड का ये मेथड बताने के बाद हो सकता है आपको इंटरवल देना दे, वो आपके उसमें नहीं। लेकिन 1 और 2 और 9 ये तो आपके पास है, इसको तो आप कर सकते हो, ये इसमें कोई कंप्रोमाइज, और जो साइंस कहती है इसमें कोई कंप्रोमाइज भी नहीं होना चाहिए। बी अलर्ट, फोकस और डीप स्लीप, ये 3 तो बिल्कुल फर्म है। बाकी के जो है डिपेंड्स अपॉन यू और योर टीचर और योर एनवायरनमेंट। बट अगर आप ये सारे फॉलो करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 तो नो प्रॉब्लम। सॉरी, तो 5 दो बार हो गया। बी अलर्ट, गेट फोकस, generate repetitions, expect and embrace errors, randomly insert micro rest intervals 10 seconds during the learning, use randomly intermittent rewards for yourself or your teachers, provide limit learning trigger session to 90 minutes or less, give 2 or 3 hours space between the 2 sessions, incorporate 10 to 30 minute NSDR post learning trigger session. NSDR, same thing, mindfulness, NSDR, non-sleep, deep rest, and maximum quality of optimal duration of sleep that night, and next, that process goes on. 1, 2 to 9 ये जो 10 steps हैं, ये ठीक है, इसमें 1, 2 और 9 को कोई compromise नहीं, आप लोग कभी compromise नहीं, बाकी के में आप डिपेंड करो, ठीक है? 1 to 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, and now you people know the role of NSDR in the learning. So in India, the joy of India is the biggest invention ever made by India is the NSDR, mindfulness meditation, that change your life, that can you apply anywhere, that skill will be yours. Neuroplasticity, because NSDR creates neuroplasticity, proven by science. ध्यान से समझ बढ़ती है, माइंडफुलनेस से आपकी समझ बढ़ती है, तो आप कुछ भी सीख सकते हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एनी स्किल। फाइटर जेट भी उड़ाना है तो प्रोटोकॉल सेम है। इसके अलावा ये प्रोटोकॉल वर्ल्ड में फॉलो हो रहा है। इवन पीपल लेस डिस्कस, कोई डिस्कस नहीं करेगा आपसे, मैं कर रहा हूँ, बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ये फॉलो सब करेंगे। कोई भी वर्ल्ड का जो भी चैंपियन होगा, जो माइकल फिलिप्स भी होगा, जो लिविंग चैंपियन है, प्रोटोकॉल यही है, फॉलो प्रोसेस सेम है, इसके अलावा और भी प्रोसेस नहीं है। वर्ल्ड सीखने का प्रोसेस यही है, कैसे भी वो सीखे, करे, बताए ना बताए, प्रोसेस सेम है सारे का, चाहे वो आर्मी का कमांडर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, प्रोसेस सेम है, ठीक है? थैंक यू। ऑथेंटिक चीज हमेशा यूट्यूब पे बहुत सारी, लेकिन ऑथेंटिक कैसे होगा? कौन सा चैनल है, कौन है वो पर्सन, कौन है, साइंटिस्ट, मतलब कोई रिनाउंड आदमी है, कुछ है, उसको फॉलो करो। जैसे फॉर जी भैया, लंबा नहीं मेरा तो खुला हुआ है और कनेक्टेड भी है। साइट है reverie.com, कैसे करें? ठीक है? उस पे जो है अवेलेबल तो सब बहुत अच्छा है।
ठीक ठीक मैं बोलता हूँ। तुम्हारे आंसर में मैंने दिया है फिर से। बोर्डर पे उसका आंसर ये देखो, मैंने तुम्हें बताया ना ठीक ठीक है क्या? देखता हूँ। क्या है बताओ, क्या बताया? क्या? नॉन स्लीप भी है तो नींद भी रहा है, तो किसी सुन के कर पाओ या अपने से कर पाओ, लेकिन बस है वो वही, अंतर इतना ही है। नींद की एक्चुअली पतंजलि ने इसको डिस्क्राइब किया है, जो समाधि है वो सुसुप्ति जैसी है। समाधि जो है वो सुसुप्ति जैसी है, तो अंतर इतना है समाधि में ध्यान में आदमी जगह रहता है, सुसुप्ति सो जाता है। बस बाकी तो सुन के करो कैसे। थैंक यू। एग्जाम्स आप लोगों के आने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने जो भी ये सीखा होगा डॉक्टर साहब के टॉक से, वो बड़ा फायदा आप लोगों को देगा, नहीं लर्निंग में, एग्जाम की प्रिपरेशन। सो मैं विज्ञान सर्वत्र पूज्यते की एंटायर ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से डॉक्टर देवेश शुक्ला को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी वंडरफुल टॉक। आप लोग सारे लोग बाहर चलें और उधर अपने कॉम्पिटिशन से, हाँ स्टाफ आप लोग विजिट करें, जो स्टाफ लगे वहाँ पे इंटरेक्ट करें क्या क्या है। निकास इधर है यार। यहाँ और भी लेक्चर नहीं अपने ये सब वही आ रहे सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। पढ़ने के बाद 2 घंटे का रेस्ट तो फिर बोल सकते हैं। आइए आप लोग नीचे में आइए। खत्म हो गया, क्या करें, किससे पूछें? मैडम तुमसे मैंने पूछा है। हाँ सब बच्चे जाहिर हैं। अच्छा समझे नहीं चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, नहीं चल रहा है। 8,000 जा रहा है, क्या करें अब।